Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine stepping back, say, early 17th century Europe. It's an electric time for science, isn't it? You've got Galileo looking up with his telescope. Newton's about to change everything with his laws of motion. Absolutely. Brilliant minds sharing incredible ideas across borders. You see these huge leaps in understanding, real macro inventions changing how people saw the world. But here's the strange part, the paradox, really. If you look at the hard numbers, like England's GDP per person back then, say between 1300 and 1680? It's basically flat, just stubbornly flat. Despite having things like the heavy plow much earlier, windmills, Gutenberg's printing press, even for the nations of physics, the economic needle barely moved. So you had these bursts of genius, these amazing inventions for centuries, millennia even, but they always seem to just fizzle out. No real lasting, compounding progress that lifted everyone up. Exactly. They lacked persistence. That's the core puzzle. It really is the biggest question in economic history, isn't it? Why did we have innovation for so long, but this kind of sustained, really life-changing economic growth only get going properly, 2 centuries ago? Why did those early sparks fail to catch fire? And that specific question, that massive shift from these short bursts to actual permanent growth, well, that's precisely what the incredible research we're exploring today tackles. Ah, okay. Yeah, this discussion is really digging into the work recognized by the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. It gives us both the deep history and the modern theory behind how sustained innovation actually works. And this Nobel Prize, it honors 3 scholars whose work fits together remarkably well. It really does. We're talking about Mokyr Philippe Aghion and Peter Howitt. And it's important, I think, to acknowledge the depth of their contributions and careers properly. Let's do that. First, there's Mokyr. He was born in Leiden in the Netherlands back in 1946. Got his PhD from Yale in 1974. And he's now a professor at Northwestern University and also at Tel Aviv University. He's really known for these sweeping historical takes on industrial change. A giant in that field, absolutely. Yeah. Then you have Philippe Aghion, born in Paris, 1956. His PhD is from Harvard, 1987. Okay. And he holds professorships at several top institutions, Collège de France, INSEAD in Paris, and also the London School of Economics. A truly global reach. And the third laureate. That's Peter Howitt, born in Canada, 1946, like Mokyr. He earned his PhD from Northwestern in 1973. Ah, Northwestern features twice there. That does indeed. And he's currently a professor down at Brown University. So, 3 brilliant minds. And the prize itself, how is that awarded? Well, the total amount is 11 million Swedish kroner. And the way it's split reflects their distinct contributions. One half goes to Joel Mokyr for laying out that crucial historical transition, the why then question. Okay, the historical foundation. Exactly. And the other half is awarded jointly to Philippe Aghion and Peter Howitt. They're recognized for formalizing the economic engine, the mechanism that keeps that growth going in modern times. That makes sense. The history and the mechanics. So our aim today, as we explore their work, is really to unpack these powerful ideas, right? Make them accessible, whether you're, say, just starting out in research or maybe just really curious about what makes the modern economy tick. Precisely. We want to respect your time, give you insights that are clear, and hopefully stick with you. And before we dive into Mokyr's historical insights, there's something special we wanted to mention. Yes, definitely. This discussion actually wraps up our channel's week-long focus on all the 2025 Nobel Prize winners. The announcements ran from October 6th through today, the 13th. It's a tradition we started last year, and it's something we really enjoy doing. It is. And we just wanted to say a huge thank you to our regular subscribers and also to everyone new who's joined us this past year. Thank you for supporting us in this. It means a lot. It really does. And look, whether you subscribe or not, we genuinely hope you'll find time to actually read the work of these laureates. It's transformative stuff. We've put links in the show notes, as always. Please do check them out. It's incredibly rewarding research. Okay, let's start with Joel Mokyr. He's the historian of the group, really tackling that transition problem. We mentioned those earlier growth spurts, Renaissance Italy, the Dutch Golden Age. Right. Figure 3 in the Nobel Committee's scientific background shows that quite clearly. They rose, but then they plateaued or even declined. Exactly. They fizzled out. But then, post-1800, you look at the UK, the US, later on, figure 2 shows this dramatic, sustained climb. It just keeps going up. So Mokyr asks, how did that initial industrial takeoff become self-propelling? What changed?
Mukyr's core argument is that the earlier failures, they boil down to a fundamental knowledge gap. Before the Industrial Revolution, innovators, even brilliant ones, often didn't really understand why their techniques worked. They knew how to do something, but not the science behind it. Precisely. They had amazing inventions, sure, but those inventions were fragile. They couldn't easily be improved upon systematically, and they ran into dead ends quickly. Mokyr had this great quote summing it up, something like, "It was a world of engineering without mechanics, iron making without metallurgy, and medical practice without microbiology and immunology." That really captures it. It's like knowing how to build a very intricate clock versus knowing the physics Newton's laws that actually make the pendulum swing predictably. Exactly that. If you only have the how-to, the prescriptive knowledge, when you hit a problem or want to improve it significantly, you're stuck. You lack the underlying principles to guide you. So Mokyr saw the solution in the interplay of two kinds of knowledge coming together. Yes, he synthesized this beautifully. He argued it was the interaction between two specific types of knowledge that finally became powerful enough to break that centuries-long stagnation. Okay, what are they? First, there's propositional knowledge. He's sometimes called it episteme. This is the theoretical stuff, the understanding of natural laws, scientific principles, mathematics, the why things work, the science base, essentially. Got it. The deep understanding. And the second? The second is prescriptive knowledge, or techne. This is the practical application. The techniques, the engineering rules of thumb, the blueprints, the actual production methods, the how-to. So before the Industrial Revolution, you might get a brilliant invention, say an early weaving machine. That's techne, clever tinkering. Right. But Mokyr says without a strong foundation of episteme, maybe understanding the physics of forces and materials, that initial invention couldn't spark a continuous stream of smaller, incremental improvements, the micro-inventions that really drive long-term productivity. I see. The big leap happens, but then it stalls because no one quite knows how to systematically make it better, faster, cheaper. Exactly. Think about the very first steam engines, like Newcomen's. Pure trial and error. Really technique. It worked, sort of, but it was incredibly inefficient. Right. Improving it fundamentally required understanding thermodynamics, the science, episteme, which didn't really get going until much later, the 19th century. Without that science, inventors were also just as likely to waste time and money on impossible ideas, like trying to build perpetual motion machines. There was no scientific framework to rule things out. So the big shift, what Mokyr calls the Industrial Enlightenment, wasn't just about famous scientists. It was about connecting these two types of knowledge. Yes, it was about creating mechanisms for interaction, getting the scientists, the philosophers, the theorists, episteme, talking to and working with the artisans, the engineers, the inventors. Techne. How did that happen? Through things like scientific societies, publications becoming more accessible, public lectures, it created a positive feedback loop that hadn't really existed at scale before. So a practical success in technology could inspire new scientific questions. Right. And breakthroughs in science could provide new tools or understanding to solve engineering problems. Technology validated science, and science guided technology. This constant interaction, this tightening feedback loop, especially in Britain around the 18th century, became strong enough to finally sustain growth. Okay, that connection is key. But Mokyr also says knowledge wasn't the only thing needed, right? There were other crucial conditions. Absolutely. Knowledge needs the right environment. The first one he stresses is mechanical competence. And this isn't just about everyone being able to read and write. No, it's more specific. It's about having a sufficient density of highly skilled people, what he calls the upper tail of human capital. We're talking about engineers, millwrights, instrument makers, skilled mechanics, people who could not just invent, but read blueprints, scale up models, install complex machinery, and, crucially, tinker with it, debug it, improve it incrementally. The tweakers, as they're sometimes called. The people who make the inventions actually work reliably in the real world. Exactly. They're the bridge between the abstract idea and the factory floor. They stop new technologies from hitting diminishing returns too quickly. And there's actual evidence for this. Studies show that industrialization took root in English counties that had lots of these skilled workers, even if wages weren't particularly low there. So it was skill, not just cheap labor, that made the difference in productivity. Yes. Meisenzahl and Mokyr actually found that about 2/3 of these key tweakers and engineers they studied were actively involved in scientific or technical societies. So those societies, like the Lunar Society in Birmingham or the Royal Society in London, weren't just debating clubs.
They were where episteme and techne physically met and collaborated. Precisely. They were crucial institutional structures. Without that pool of competent people who could understand both the theory and the practice, the ideas would have stayed siloed. You can contrast this with history, right? Could see. Well, think of ancient Greece. Incredible philosophy, episteme, but relatively little focus on practical application or widespread economic improvement. Or the medieval period, lots of clever practical inventions, techne, but often without the underlying scientific understanding to push them further or make them systematic. So Britain, after the Enlightenment, managed to get the science, the practical skills, and the institutions to link them together. That's the argument. But there's one more absolutely critical piece, maybe the most fragile one, a society open to change. Because new technology always disrupts things. It creates losers. Always. And those losers tend to fight back. If a society allows vested interests, people benefiting from the old way of doing things, to easily block new innovations, then progress grinds to a halt, no matter how good the science or skills are. History's full of examples, isn't it? You mentioned the clone tailors trying to ban a machine for making pinheads way back in 1397. Yeah, and the story, maybe apocryphal but illustrative, of the inventor of a ribbon loom in Danzig being drowned in 1579 because it threatened jobs. Wow. And then the Luddites, of course, smashing power looms in England in the early 1800s. These aren't just quaint stories. They show that technological progress is deeply political. If the groups hurt by change have enough power to stop it, they often will. Protecting their current position seems more important than uncertain future gains for society as a whole. So why did Britain succeed where others might have failed? What was different institutionally? Mokyr points to Britain's parliament. It wasn't perfect, obviously, but it functioned as a kind of meta-institution, a place where different interest groups could bargain, negotiate, maybe even compensate losers. Yep. It provided a mechanism, however messy, to push through changes that were broadly beneficial in the long run, even over strong objections from groups who stood to lose out. Pluralism and flexibility were key. Compared to, say, a more centralized system. Exactly. Think about the famous Needham puzzle. All right. Why did China, which was technologically far ahead of Europe for centuries, stall after about the 14th century? Right, they had gunpowder, printing, the compass. Incredible innovations. But Mokyr suggests one factor was that innovation was much more state-controlled. When the imperial court decided to prioritize stability or cut back on things like Zheng Ke, his voyages of exploration around 1430, the whole system could just stop. There wasn't that decentralized, competitive, sometimes chaotic push for innovation that Europe, particularly Britain, had. Openness to new, potentially disruptive ideas and institutions that could manage the resulting conflicts were crucial. So the message from Mokyr is really powerful. Sustained growth needs the synergy of science, skills, and a political system that can actually navigate the disruption that progress inevitably brings. Okay, so Mokyr gives us this rich historical picture of how sustained growth got started, the necessary ingredients. Now, let's shift to Philippe Aghion and Peter Howitt. Their work explains how that growth engine keeps running in modern economies, right? Even though it looks quite turbulent underneath. That's exactly right. If Mokyr explains the takeoff, Aghion and Howitt explain the ongoing flight, even with all the engine noise and vibration. They were really struck by how modern economic growth isn't smooth or incremental at the firm level. It's driven by entrepreneurs coming up with new things that very often wipe out the old ways. Business stealing. Yes, business stealing. Innovators create new products or processes, and in doing so, they destroy the profits, the economic rents of the established incumbent firms. This is the core idea of Joseph Schumpeter's creative destruction, but Aghion and Howitt gave it a rigorous mathematical structure. So when we look at the big aggregate numbers, like annual GDP growth, maybe it looks like a steady 2% or something. But Aghion and then Howitt are saying, hold on, look underneath that number. What's happening at the level of individual businesses? And it's incredibly dynamic, almost chaotic. The data they highlight is really eye-opening. In a mature economy like the US, you typically see something like 10% or even more of all firms either entering or exiting the market every single year. 10% churn. That's huge. It is. And it's not just firms. Job creation and job destruction rates are also really high, often within the very same industry. It's not like one sector is booming and another's dying. The churning happens within sectors. And this isn't just random noise, it's connected to growth. Intrinsically connected. Empirical work, including theirs, shows a strong positive relationship between things like firm exit rates or job destruction rates and overall labor productivity growth. This dynamism is the growth process in action. How much of growth comes from this churning?
Estimates vary, but figures like a quarter to even half of aggregate productivity growth are often attributed to this process of resources shifting capital and labor, moving from less productive exiting or shrinking firms to more productive entering or expanding ones. You don't get sustained growth without that reallocation. So how did they model this mathematically? What's the core idea for someone new to this? Okay, so simplifying it a bit, they built models where firms deliberately invest in research and development, R&D, hoping to innovate. And innovation isn't just a tiny improvement, it's modeled as a significant quality step. Like a leap forward. Exactly. When a firm successfully innovates, it improves the quality or lowers the cost of a product by a noticeable factor. They often use the Greek letter gamma, to represent this step size, where gamma is greater than 1. So the new version isn't just 1% better, it's significantly better. Right. And crucially, in their baseline model, a successful innovation typically gives the innovator a patent, temporary monopoly power. But it instantly makes the previous best technology obsolete. The old leader gets knocked off the perch and exits. That's the destruction part. That's the destruction. And the models focus on key things like the value of being the incumbent leader, let's call it VIRE, and how that value is affected by the expected future rate of creative destruction, which they might call $7. Meaning, if I'm the leader now, but I expect someone to invent something better really soon. My current position is worth less. The threat of being displaced hurts my value today. The model captures that financial risk of future innovation. Okay. And there's another piece about knowledge. Yes, a critical piece. Knowledge spillovers. New innovators don't start from scratch. They build on the existing technological frontier. Isaac Newton's famous line, "Standing on the shoulders of giants," is built right into the framework. The next chip design builds on the knowledge embedded in the current best chip. So knowledge accumulates for society, even as individual firms rise and fall. Precisely. The knowledge base grows, but the profits for any single firm are always temporary, always under threat. And this leads to a really fundamental tension, and a question you might naturally ask. Which is? If I'm the incumbent, the current leader, and I know someone's gunning for me, why don't I just innovate aggressively myself to stay ahead? Why let an outsider destroy me? Yeah, that seems logical. Why wouldn't the established company just pour resources into R&D to preempt the competition? This is where Aghion and Howitt really sharpened an older idea, Kenneth Arrow's replacement effect. They showed mathematically why incumbents often have less incentive to pursue radical, disruptive innovation in their own core markets compared to potential entrants. Okay, break that down. How does that work? Let's use an example. Sure. Imagine you're the incumbent, the market leader, and you're making, say, $100 million a year in profit from your current product. Okay, doing well. Now, you can invest in R&D and maybe develop a new, better version that would earn you $110 million a year. If you succeed, what's your net gain? Well, it's only $10 million more, right? Because I'm replacing my existing $100 million stream, plus I had to pay for the R&D. Exactly. Your gain is incremental. You're essentially cannibalizing your own successful product. Now think about a new entrant, starting from zero profit. If they spend the R&D money and develop that same $110 million product, their gain is the whole $110 million. They have nothing to cannibalize. Precisely. The entrant stands to gain the entire value of the innovation, while the incumbent only gains the marginal difference. This fundamental difference in incentives means that the really disruptive, creative destruction type innovations are much more likely to come from outsiders, from new entrants who have everything to gain and nothing to lose by shaking up the status quo. That's a powerful insight. It explains why established giants can sometimes seem slow to adapt or miss the next big thing. It's not necessarily incompetence, it's partly baked into their incentives. It's baked into the structure of the competitive process. This arrow replacement effect ensures that the engine of creative destruction is constantly fueled by challengers, keeping the dynamism going, even if it's turbulent. #, synthesis, policy, and the future of progress. So I've got Mukyr's historical stage setting and Aghion and Howitt's dynamic engine. Putting them together leads to some really deep and sometimes uncomfortable insights about economic growth. One of the biggest is this. The rate of growth that emerges from the free market, from all this creative destruction, is not automatically the best rate for society as a whole. Wait, how can that be? How can the market produce too much innovation or growth? Isn't more growth always better? Not necessarily, when you factor in the side effects. Aghion and Howitt's framework highlights 3 key externalities effects that spill over onto society, but aren't fully captured in the innovator's private calculation. And these effects push in different directions, partially canceling each other out, making the outcome uncertain.
Okay, what's the first one? The one that might push growth too high. That's the business stealing effect. Remember, innovators are motivated by grabbing the market share and profits currently held by incumbents. Right, the lure of monopoly rents. Exactly. But from society's perspective, simply transferring profits from firm A to firm B isn't necessarily a net gain. And the innovator doesn't care about the value of the capital or skills that get destroyed when the incumbent firm goes under. Their private incentive, the profit they steal, might be larger than the true net social gain from the innovation, especially if multiple firms are racing wastefully on similar R&D. This can lead to too much R&D, too much focus on marginal improvements just to steal business, rather than truly fundamental breakthroughs. So the competitive race itself can be socially inefficient because innovators ignore the destruction they cause. That's the potential downside, pushing growth incentives potentially too high. But then there are two effects pushing the other way, potentially making market-driven growth too low. Okay, what are those? The first is the one we touched on: knowledge spillovers, or positive externalities. Innovators build on past knowledge, sure, but their innovations also become part of the knowledge base for all future innovators, forever. But they only care about the profits they make until they get displaced, right? Exactly. They don't capture the full, infinite value their idea adds to human knowledge. Since they can't capture that long-term social benefit, they tend to underinvest in R&D, especially in more fundamental, basic research, compared to what would be socially optimal. Okay, so business stealing pushes growth too high, knowledge spillovers push it too low. What's the third factor? The third one also pushes growth too low. It's the monopoly distortion. When an innovator succeeds and gets temporary monopoly power, what do? They charge higher prices. Right. And those higher prices mean that their new superior product or process might be underutilized by other firms in the economy who would use it as an input. If a new, faster computer chip is priced really high, fewer companies will design products around it. This inefficiently slow adoption across the economy dampens the overall aggregate growth impact of the innovation. Wow, so you have these three forces pulling in different directions. The net result could be that the market produces too much growth or too little growth compared to the ideal. Exactly. It's not guaranteed to be optimal. And it highlights that growth isn't some abstract good. It creates real winners and real losers. And the process itself has these complex side effects that policy needs to consider. And this framework, it does more than just explain the overall rate of growth. It sheds light on real-world patterns, doesn't it? Like the relationship between how competitive a market is and how innovative it is. Yes. One of the most famous empirical findings linked to their work is the inverted U relationship between competition and innovation. Inverted U, meaning it goes up, then down. Precisely. The finding, supported by a lot of data, is that when competition is very low, think of a pure monopoly, there's little incentive to innovate. Why bother if you're already protected and earning high profits? Complacency sets in. Right. Then, as competition increases, moving toward firms that are more evenly matched, neck and neck competition, innovation actually increases. Firms innovate fiercely to try and escape competition, to get that temporary edge and the monopoly profits that come with it. This is the upward sloping part of the U. That makes sense. Competition spurs effort. But then it goes down again. Yes. If competition becomes too intense, really cutthroat, where profits are driven down close to zero for everyone, then innovation tends to fall off again. Why? Because firms simply can't afford the high upfront costs of R&D if there's no prospect of recouping those investments through future profits. So not too little competition, not too much. A Goldilocks level is best for innovation. Kind of. It suggests that policies aiming to just maximize competition might actually stifle innovation if they go too far. It's more nuanced. And this framework seems incredibly relevant today, especially when people talk about the productivity slowdown observed in many developed countries since the mid-2000s. Absolutely. Look at the timing. The slowdown in productivity growth seems to coincide with data showing a decline in business dynamism, fewer startups, lower rates of firm entry and exit, maybe rising market concentration in some sectors. So the theory would suggest... It would suggest that perhaps we've drifted away from that dynamic escape competition zone on the inverted U, maybe towards a situation with more dominant firms facing less pressure. If incumbent firms are better able to block entry or face less threat from creative destruction, the model predicts exactly what we've seen: slower aggregate productivity growth. Which brings us squarely to policy. What does this body of work tell policymakers grappling with things like regulating big tech or boosting innovation?
It offers clear guidance, actually. First, it says that optimal regulation needs to be coordinated. You can't think about antitrust or competition policy in isolation from patent policy or R&D subsidies. They're all interconnected because they all affect the incentives for innovation and the structure of the market. So just throwing R&D subsidies out there might not be the best approach. It might be inefficient if you don't also consider the business stealing effect or the degree of competition. Policy needs to be targeted. Maybe you need stronger antitrust in some areas to boost competition, but maybe also well-designed patents to ensure innovators can recoup costs, alongside support for basic research to address this spillover problem. It's a balancing act. And given that growth requires this destruction, this churning, what about the impact on workers? This is absolutely crucial, probably the most critical policy implication for social cohesion. The theory makes it clear. More dynamism, more growth, inevitably means more job churning, higher rates of job separation. Workers will lose jobs more frequently, even if new ones are being created elsewhere. Which can be terrifying for individuals and communities. Of course. And that's why the framework strongly implies the need for robust social insurance systems. Policies that help workers navigate these transitions are essential not just for fairness, but for maintaining public support for growth itself. This is where ideas like flexicurity come in, like we see in Denmark or the Netherlands. Exactly. Flexicurity tries to combine labor market flexibility, making it easier for firms to adjust their workforce, which facilitates creative destruction with strong security for workers. This means generous unemployment benefits, but also, critically, substantial investment in retraining programs and active help finding new jobs. So the system supports dynamism, but cushions the blow for those adversely affected. Yes, it makes the destruction side of creative destruction less painful, which builds political consensus to allow the creative side to flourish. Without that support, you risk a backlash against technological progress altogether. And finally, looping back to Mukyr's point about skills, growth ultimately comes down to people having ideas, doesn't it? It does. And Aghion and Howitt's work also emphasizes the importance of tapping the entire pool of talent. Growth depends on selecting the most able people to become inventors and entrepreneurs. If society has barriers based on background, wealth, geography, gender, race that prevent talented individuals from pursuing innovative careers, the whole economy suffers. So things like social mobility and access to quality education aren't just social issues, they're fundamental economic growth issues. Absolutely. Empirical evidence tends to show a positive link between measures of social mobility and economic growth rates. You need institutions and policies that ensure you're drawing innovators for the widest possible talent pool to maximize the rate of progress. #TAG-TAG-B. Conclusion and final thought. So bringing this all together, it's a remarkably complete picture. Mokyr gives us the deep history, the prerequisites that got sustained growth, started that vital mix of open science, practical skills, and institutions that could handle change. And then Aghion and Howitt provide the engine that keeps it going today, this relentless process of creative destruction, driven by business stealing, shaped by those complex R&D incentives, and requiring constant policy attention to keep it balanced and socially acceptable. The combined message feels, well, quite profound, actually. It reminds us that the economic stagnation we saw for most of human history was the norm. This period of sustained growth we've lived through is the exception. A fragile exception. It depends entirely on keeping those feedback loops working between science and application, between innovation and competition, and on continually managing the resistance that progress inevitably creates. What about the future? Do these frameworks give us clues about things like AI? I think they do. You could argue that powerful AI might dramatically grease the wheels of Mokyr's feedback loop. If AI helps us discover scientific principles episteme faster, and also makes it cheaper and easier for people to apply that knowledge, technique, it could potentially accelerate the entire cycle of innovation. But presumably, that also depends on getting the regulatory environment right, managing the potential downsides. Absolutely. The potential is huge. But so are the challenges in terms of disruption, market power, and ensuring the benefits are broadly shared. The frameworks we've discussed are more relevant than ever. As we finish up our exploration of their work, maybe we can leave our listeners with a final thought to mull over. This era of sustained growth, it's really only been around for maybe 250 years, a tiny sliver of human history. It is startlingly short. And the core message from these laureates is that its continuation is not guaranteed. It's not automatic. What's the biggest risk then? Complacency. I think the risks are twofold, mirroring the insights we've discussed.
One risk is that established interests, incumbents who benefit from the status quo, become too powerful and successfully lobby to block or slow down the forces of creative destruction. We need to watch rising market concentration and barriers to entry very carefully. Protecting the established at the expense of the new. Exactly. The other risk is neglecting the foundations Mokyr highlighted, particularly eroding support for open science, for fundamental research, for the institutions that foster that critical interaction between episteme and techne. If the knowledge base weakens, the whole engine sputters. So the fundamental choice society keeps facing is whether we prioritize stability and protecting what exists now, or whether we embrace the disruption that comes with unleashing the new. That's the essential tension, and the work of Mokyr, Aghion, and Howitt provides an indispensable map for navigating it. Failing to heed their lessons about openness, dynamism, and managing the consequences of change risks sliding back towards that long historical norm of stagnation. It's a choice we have to keep making. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো একবার, মানব ইতিহাসে হাজার হাজার বছর কত সময় কেটে গেল, কত আবিষ্কার হলো, ছাপাখানা ধরুন বা সমুদ্রে চলার জন্য আরও ভালো পালতোলা জাহাজ, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন সেটা যেন একই জায়গায় আটকে ছিল। হ্যাঁ, ঠিকই। যেমন ইংল্যান্ডের কথাই যদি ধরেন, ১৩০০ থেকে ১৭০০ ৪০০ বছরে মাথাপিছু আয় কিন্তু প্রায় বাড়েইনি। তাই তো। অথচ দেখুন, শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ধরুন ১৮০০ সাল থেকে কেমন যেন একটা স্রোত এলো, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে একটা টানা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি শুরু হলো, টেকসই বৃদ্ধি। অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার। এই যে বিশাল পরিবর্তন, এটা কিভাবে সম্ভব হলো, যা আগে হাজার বছরেও হয়নি? এইটাই হলো আসল প্রশ্ন। আর এই যে পুরনো কিন্তু ভীষণ মৌলিক একটা ধাঁধা, এর সমাধানের পথ দেখানোর জন্যই কিন্তু এবছর ২০২৫ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, পুরস্কারটা, যার পুরো নাম সুইডিশ রিক্সব্যাংক প্রাইজ ইন ইকোনমিক সায়েন্সেস ইন মেমোরি অফ অ্যালফ্রেড নোবেল, পেয়েছেন ৩ জন অর্থনীতিবিদ: জোয়েল মোকির, ফিলিপ অ্যাগিয়ন আর পিটার হাউইট। জোয়েল মোকির, ফিলিপ অ্যাগিয়ন, পিটার হাউইট। হ্যাঁ, তাদের গবেষণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে কেন কিছু সমাজ অন্যদের চেয়ে বেশি উদ্ভাবনী হতে পারে, আর ঠিক কোন পথে প্রযুক্তিগত উন্নতিটা দীর্ঘমেয়াদী টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে আসে। আসুন তাহলে এই অসাধারণ মানুষগুলোর সাথে একটু পরিচিত হওয়া যাক। প্রথমে জোয়েল মোকির। ওনার জন্ম ১৯৪৬ সালে নেদারল্যান্ডসের লিডেন শহরে। পিএইচডি করেছেন ১৯৭৪ সালে আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে। আর এখন তিনি আমেরিকার নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি আর ইসরায়েলের তেল আবিব ইউনিভার্সিটির ইতান বেরগ্লাস স্কুল অফ ইকোনমিক্সের প্রফেসর। এরপর ফিলিপ অ্যাগিয়ন, জন্ম ১৯৫৬ প্যারিসে, পিএইচডি করেছেন হার্ভার্ড থেকে ১৯৮৭ সালে। হার্ভার্ড? আচ্ছা। হ্যাঁ, উনি এখন ফ্রান্সের কলেজ ডি ফ্রান্স এবং ইনস্যাড, আর সেই সাথে লন্ডনে ইউকেতে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রাধ্যাপক। আর তৃতীয় জন পিটার হাউইট। ওনার জন্ম ১৯৪৬ সালে কানাডায়। পিএইচডি করেছেন নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭৩ সালে। মুকিরের ১ বছর আগে। হ্যাঁ, আর উনি এখন আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। এই ৩ জনের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আর পুরস্কারের যে অর্থ 11 মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার। 11 মিলিয়ন? হ্যাঁ, এর অর্ধেকটা পাচ্ছেন জোয়েল মোকির একা, আর বাকি অর্ধেকটা ফিলিপ অ্যাগিয়ন আর পিটার হাউইট যুগ্মভাবে পাচ্ছেন। আচ্ছা, বেশ। আজকের এই আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য থাকবে ওনাদের যে মূল ভাবনাগুলো, সেগুলো যতটা সম্ভব সহজ করে বলা, তাই না? একদম। বিশেষ করে যারা ধরুন একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, বা হয়তো নিজের গবেষণা শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এটা খুব কাজে লাগতে পারে। আমরা চেষ্টা করব একটা সহজবুদ্ধ আলাপের মধ্যে দিয়ে তাদের কাজের গভীরতাটা ধরতে। আর এখানে একটা বিশেষ ঘোষণা আছে, তাই না? হ্যাঁ, মনে করিয়ে দিয়ে, এই পুরো সপ্তাহ জুড়ে আমরা আমাদের চ্যানেলে ২০২৫ সালের বিভিন্ন নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের অসাধারণ কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। নোবেল ঘোষণা তো শুরু হয়েছিল ৬ই অক্টোবর, আর আজ ১৩ই অক্টোবর শেষ হলো। হ্যাঁ। তো
অর্থনীতি নিয়ে আজকের এই পর্বটাই এবছরের নোবেল সেলিব্রেশন সিরিজের শেষ পর্ব। গত বছর থেকে আমরা এটা শুরু করেছিলাম। আমাদের পাশে থাকার জন্য, মানে এই উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য আমাদের পুরনো আর নতুন সব বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ। সত্যিই ধন্যবাদ। তাহলে ফেরা যাক আজকের বিষয়ে। জোয়েল মোকি, উনি তো অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ, তো ওনার কাজ দিয়েই শুরু করি। হ্যাঁ, উনি তো সেই পুরনো প্রশ্নটাই আবার তুলে এনেছেন, কেন শিল্প বিপ্লবের আগে এত কিছু আবিষ্কার হলেও সেটা টেকসই বৃদ্ধি আনলো না, আর অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে এমন কি হলো যে এই চাকাটা ঘুরতে শুরু করলো এবং ঘুরেই চলেছে। ঠিক তাই। দেখুন, মকির দেখিয়েছেন যে ইতিহাসে কিন্তু উদ্ভাবনের অভাব ছিল না। প্রাচীন গ্রিস, রোম, মধ্যযুগের ইউরোপ বা ধরুন রেনেসান্সের ইতালি, ডাচদের স্বর্ণযুগ, এমনকি 1500 শতকের চীন। চীন তো তখন অনেক এগিয়ে ছিল শোনা যায়। হ্যাঁ, প্রযুক্তিগত দিক থেকে তো বটেই, কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপের চেয়ে এগিয়েই ছিল। কিন্তু এই যে এত উদ্ভাবন, এগুলো হয় একটা জায়গায় এসে থেমে গেছে অথবা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আর বদলায়নি। এটা সত্যি একটা বিরাট রহস্য ছিল। তাহলে মকিরের ব্যাখ্যাটা কি? কিভাবে এই রহস্যের জট খুললেন তিনি? কোনো জাদু বলে পরিস্থিতি পাল্টালো? না না, জাদু নয়। মকির আসলে কতগুলো বাস্তব উপাদানের মেলবন্ধনের কথা বলেছেন। উনি জোর দিয়েছেন একটা ধারণার ওপর, ব্যবহারিক জ্ঞান বা ইউজফুল নলেজ। ব্যবহারিক জ্ঞান? হ্যাঁ, তার মতে এই ব্যবহারিক জ্ঞানের বৃদ্ধি আর তা ছড়িয়ে পড়াটাই হলো টেকসই প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। আর এই জ্ঞানকে উনি দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। কি সেই দুটো ভাগ? একটু যদি বুঝিয়ে বলেন। প্রথমটা হলো প্রস্তাবনামূলক জ্ঞান, মানে প্রপোজিশনাল নলেজ। এটা হলো গিয়ে প্রকৃতি কিভাবে কাজ করে, জগতের নিয়মকানুন কি, এই সব নিয়ে আমাদের যে তাত্ত্বিক জ্ঞান, মানে আমরা যেটাকে বিজ্ঞান বলি আর কি, কেন ঘটছে সেই উত্তরটা খোঁজা। আচ্ছা, তত্ত্ব। আর দ্বিতীয়টা হলো বিধানমূলক জ্ঞান, মানে প্রেসক্রিপটিভ নলেজ। এটা হলো প্রায়োগিক জ্ঞান, মানে কিভাবে একটা কাজ করতে হয়, একটা জিনিস বানাতে হয়, সেই কৌশল বা টেকনিক কিভাবে করতে হয় তার জ্ঞান। তার মানে একটা থিওরি আর একটা প্র্যাকটিক্যাল। মোটামুটি তাই। মকিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণটা হলো শিল্প বিপ্লবের আগে এই দুই ধরনের জ্ঞানের মধ্যে কিন্তু যোগাযোগটা খুব কম ছিল। মানে বিজ্ঞানীরা হয়তো প্রকৃতির নিয়ম বুঝছেন, কিন্তু সেই জ্ঞান কারিগরদের কাজে লাগছে না তেমন। আবার কারিগররা হয়তো দারুণ সব জিনিস বানাচ্ছেন, কিন্তু তার পেছনের বিজ্ঞানটা হয়তো তারা জানেন না বা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। কিন্তু জ্ঞানার্জন বা এনলাইটেনমেন্ট যুগে সে এই ছবিটা পাল্টে দিল, তাই কি? একদম। মকিরের যুক্তি এটাই যে ওই জ্ঞানার্জনের সময়কালে ইউরোপে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, এই দুই ধরনের জ্ঞানের মধ্যে একটা দারুণ বোঝাপড়া তৈরি হয়, একটা পজিটিভ ফিডব্যাক লুপ, মানে একে অপরকে সাহায্য করা। ঠিক। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো সরাসরি নতুন বা উন্নত প্রযুক্তি তৈরিতে কাজে লাগতে শুরু করলো। যেমন ধরুন, তাপগতিবিদ্যার জ্ঞান কাজে লাগলো স্টিম ইঞ্জিনের উন্নতিতে। আবার উল্টোটাও ঘটল, মানে প্রায়োগিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, ধরুন আরও ভালো কাপড় বানাতে হবে, সেই চাহিদাটা নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে উস্কে দিল। নতুন রাসায়নিক বা যন্ত্রের খোঁজ শুরু হলো। বাহ, মানে একটা চক্রের মতো। হ্যাঁ, একটা অবিরাম আদান প্রদান, একটা জ্ঞান চক্র বা ভার্চুয়াস সাইকেল। বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিচ্ছে, উন্নত প্রযুক্তি আবার নতুন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন তুলছে। এই চক্রটাই টেকসই প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিনটাকে চালু করে দিল। এটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু শুধু জ্ঞান থাকলেই তো হবে না, আইডিয়া থাকলেই হবে না, সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লোকও তো চাই। ঠিক এইখানেই মকিরের আরেকটা বড় অবদান। উনি ওই মাঝের লোকগুলোর ওপর খুব জোর দিয়েছেন, মানে দক্ষ কারিগর, মেকানিক, ইঞ্জিনিয়ার, যাদের উনি মজা করে বলেছেন টিঙ্কারার্স। হ্যাঁ, এরাই ছিল সেই মানুষগুলো যারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা নতুন আইডিয়াগুলোকে কারখানায় ব্যবহার করতে পারত, যন্ত্রের ডিজাইন ভালো করতে পারত, ছোটখাটো কিন্তু জরুরি উন্নতিগুলো করে নতুন কৌশলকে আরও কাজের করে তুলত। মানে শুধু বড় আবিষ্কারক নয়, তাদের নিচের সারির কারিগররাও। একদম। জেমস ওয়াট বা রিচার্ড আর্করাইটের মতো বিখ্যাতরা তো ছিলেনই, কিন্তু তাদের নিচে ছিল অসংখ্য নাম না জানা দক্ষ কারিগর। তাদের হাতছাড়া শিল্প বিপ্লব হতোই না। মকির বলছেন, ওই অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনে এই ধরনের দক্ষ কর্মীর যোগান অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এটাই তাদের একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ দিয়েছিল। বুঝলাম। তাহলে জ্ঞান হলো, দক্ষ কারিগরও পাওয়া গেল, কিন্তু নতুন প্রযুক্তি এলে তো পুরনোরা, মানে যাদের ব্যবসা পুরনো প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল, তারা তো বাধা দেবেই।
সে বাধাটা টপকানো গেল কি করে? এটাও মকিরের যুক্তির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। উনি দেখিয়েছেন প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সবসময় সমাজে একটা নাড়া দেয়। নতুন প্রযুক্তি এলে পুরনো দক্ষতা, পুরনো যন্ত্রপাতি বা মূলধন অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে সেই পুরনো প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীগুলো, মানে ভেস্টেড ইন্টারেস্টস, তারা পরিবর্তনকে আটকানোর চেষ্টা করে। ইতিহাসে তো এমন অনেক উদাহরণ আছে, তাই না? প্রচুর। যেমন ধরুন, জার্মানির কোলন শহরে দর্জিরা পিনহেড বানানোর মেশিন ব্যবহার করতে দেয়নি, বা ধরুন ইংল্যান্ডের লুডাইট শ্রমিকরা নতুন তাঁতযন্ত্র ভেঙে ফেলেছিল 19 শতকের শুরুতে। তাহলে এই রকম প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও শিল্প বিপ্লব সফল হলো কেন ব্রিটেনে? মকিরের মতে এখানেও জ্ঞানার্জনের একটা প্রভাব ছিল। ওই সময়ে ইউরোপীয় সমাজে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, নতুন চিন্তা, বৈজ্ঞানিক খোঁজখবর আর পরিবর্তনের প্রতি একটা খোলা মনোভাব তৈরি হচ্ছিল। পুরনোকে প্রশ্ন করার সাহস বাড়ছিল। শুধু মনোভাব নাকি অন্য কিছুও ছিল? শুধু মনোভাব নয়, ব্রিটেনের যে রাজনৈতিক কাঠামো, বিশেষ করে পার্লামেন্ট, সেটাও একটা ভূমিকা রেখেছিল। সেটা একটা প্ল্যাটফর্মের মতো কাজ করেছিল, যেখানে বিভিন্ন স্বার্থের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দর কষাকষি হতো, আলোচনা হতো এবং শেষমেশ একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যেত। মানে একটা দর কষাকষির জায়গা ছিল। হ্যাঁ, এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হয়তো সবসময় খুব মসৃণ ছিল না, কিন্তু এটা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পথে যে বাধাগুলো আসছিল সেগুলোকে ধীরে ধীরে সরাতে সাহায্য করেছিল। আর তার ফলেই জোসেফ শুম্পিটারের বলা সেই সৃজনশীল ধ্বংস, মানে ক্রিয়েটিভ ডিস্ট্রাকশন, নতুন কিছু তৈরির জন্য পুরনোকে ধ্বংস করা। ঠিক সেই প্রক্রিয়াটা ওই সময় ব্রিটেনে তুলনামূলকভাবে সহজে ঘটতে পেরেছিল। তার মানে টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য শুধু প্রযুক্তি বা দক্ষতা নয়, সামাজিক আর রাজনৈতিক পরিবেশটাও সমান জরুরি। একদম। মকির এই ব্যাপারটাই খুব জোর দিয়ে বলেছেন, আর তিনি তার তত্ত্বকে দাঁড় করানোর জন্য নানা ধরনের প্রমাণ ব্যবহার করেছেন। মানে বড় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনা, যেমন ইউরোপ বনাম চীন, আবার নির্দিষ্ট ঘটনার গভীর বিশ্লেষণ, যেমন ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের কেস স্টাডি, আবার পরিমাণগত তথ্য, যেমন কতগুলো সায়েন্টিফিক পেপার বেরোচ্ছে, পেটেন্টের সংখ্যা, দক্ষ শ্রমিকের মজুরি, এই সব মিলিয়ে উনি দেখিয়েছেন যে জ্ঞান, দক্ষতা আর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, এই তিনের একটা বিরল সমন্বয় ঘটেছিল বলেই টেকসই প্রবৃদ্ধি শুরু হতে পেরেছিল। বেশ, তাহলে মকির আমাদের বোঝালেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা, মানে যখন টেকসই প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিনটা প্রথম চালু হলো। কিন্তু সেই ইঞ্জিনটা আজও চলছে কি করে? আধুনিক অর্থনীতিতে এই প্রবৃদ্ধির চাকাটা ঘুরছে কিভাবে? এইখানেই কি ফিলিপ অ্যাগিয়ন আর পিটার হাউইটের কাজটা আসছে? ঠিক ধরেছেন। মকির যদি হন প্রবৃদ্ধির সূচনা পর্বের ব্যাখ্যাকার, তাহলে অ্যাগিয়ন আর হাউয়েট হলেন আধুনিক যুগে প্রবৃদ্ধিটা কিভাবে টিকে থাকে, তার ভেতরের ডাইনামিক্সটা কি, সেটা তাত্ত্বিক রূপকার। আচ্ছা। আর বিঘ্নকারী, মানে ডিসরাপটিভ প্রক্রিয়া। এই বিঘ্নকারী প্রক্রিয়া, এটাই কি সেই বিখ্যাত সৃজনশীল ধ্বংস, ক্রিয়েটিভ ডিস্ট্রাকশন, যেটা শুম্পিটার বলেছিলেন? হ্যাঁ, আইডিয়াটা শুম্পিটারেরই, কিন্তু শুম্পিটার এটাকে একটা দারুণ পর্যবেক্ষণ বা ইনসাইট হিসেবে বলেছিলেন। অ্যাগিয়ন আর হাউইটের আসল কন্ট্রিবিউশন হলো তারা এই আইডিয়াটাকে একটা ফর্মাল, মানে গাণিতিক মডেলে নিয়ে এলেন। তারা দেখালেন এই সৃজনশীল ধ্বংসটাই হলো আধুনিক ক্যাপিটালিস্ট অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি, মানে ইঞ্জিন, যা টেকসই বৃদ্ধিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এই মডেলটা কিভাবে কাজ করে? মানে সৃজনশীল ধ্বংসের প্রক্রিয়াটা ঠিক কি রকম? আদি মডেলের মূল কথাটা হলো অর্থনীতিতে ফার্মগুলো লাভের আশায় রিসার্চ আর ডেভেলপমেন্টে, মানে R&Dতে পয়সা ঢালে। কেন? নতুন কিছু উদ্ভাবন করার জন্য, ইনোভেশন। যখন কোনো ফার্ম একটা সফল ইনোভেশন করে ফেলে, ধরুন একটা ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট বা জিনিস তৈরির একটা সস্তা উপায়, তখন তারা বাজারের একটা বড় অংশ দখল করে নেয়। আর পুরনোরা এই নতুন আর উন্নত উদ্ভাবনটা পুরনো কম কাজের জিনিস বা টেকনোলজিকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়। পুরনো কোম্পানিগুলো হয়তো লস করে বা ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আগিয়ন আর হাউয়েট এটাকে বলছেন বিজনেস স্টিলিং। বিজনেস স্টিলিং, ইন্টারেস্টিং টার্ম। হ্যাঁ, এর ফলে কি হয়? অর্থনীতিতে আমরা দেখি সমানে কিছু নতুন ফার্ম ঢুকছে বাজারে, এন্ট্রি, কিছু পুরনো ফার্ম বেরিয়ে যাচ্ছে, এক্সিট, আর বাজারের ভেতরে কোম্পানিগুলোর পজিশন, মানে মার্কেট শেয়ার, সমানে বদলাচ্ছে। এই পুরো নাড়াচাড়ার প্রক্রিয়াটাকে বলে টার্নওভার বা চার্নিং। আপনি যদি আমেরিকার ডেটা দেখেন, দেখবেন প্রতি বছর প্রায় 10% বেশি ফার্ম হয় ঢোকে, নয়তো বেরিয়ে যায়। তার মানে এই যে ফার্ম লেভেলে এত কম্পিটিশন, এত ভাঙা গড়া,
এটাই আসলে ম্যাক্রো ইকোনমির লং টার্ম গ্রোথ টিকিয়ে রাখছে। এটা তো একটু অন্যরকম শোনাচ্ছে। ঠিক তাই। আপাত দৃষ্টিতে এই যে অস্থিরতা, এটা খারাপ মনে হতে পারে, কিন্তু অ্যাগিয়ন হাওয়েটের মডেল দেখাচ্ছে যে এই নিরন্তর প্রতিযোগিতা আর পুরনোকে হটিয়ে নতুনের আশাই আসলে দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন। তাদের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলটা ব্যাখ্যা করে। কি ব্যাখ্যা করে? যেমন কেন ফার্মগুলো জেনে শুনে R&Dতে এত টাকা ঢালে, কারণ তারা ইনোভেট করে মার্কেট লিডার হতে চায়। আচ্ছা। কিভাবে নতুন ইনোভেটররা সফল হলে পুরনো কম এফিশিয়েন্ট ফার্মগুলোকে সরিয়ে দেয়, মানে ওই সৃজনশীল ধ্বংসের মেকানিজমটা। আর খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে কিভাবে জ্ঞান এক জেনারেশন থেকে পরের জেনারেশনে জমা হয়। মানে নতুন উদ্ভাবকরা তো শূন্য থেকে শুরু করে না, তারা আগের জ্ঞানের ওপর ভর করেই এগোয়। এটাকে অনেক সময় বলে স্ট্যান্ডিং অন দ্য শোল্ডার্স অফ জায়ান্টস। জ্ঞানীদের কাঁধে ভর করে দাঁড়ানো। সুন্দর বলেছেন। হ্যাঁ, তাদের মডেল এই জ্ঞান জমার প্রক্রিয়াটাকেও ধরতে পারে। এই মডেল কি প্রতিযোগিতা আর উদ্ভাবনের সম্পর্ক নিয়েও কিছু বলে? আমরা তো ভাবি যত বেশি কম্পিটিশন তত বেশি ইনোভেশন। এটা কি সবসময় সত্যি? এটা খুব ভাইটাল একটা প্রশ্ন, আর অ্যাগিয়ন হাউইটের মডেল এখানেও একটা দারুণ উত্তর দেয়। তারা দেখায় সম্পর্কটা সবসময় লিনিয়ার নয়, মানে এমন নয় যে প্রতিযোগিতা বাড়ালেই ইনোভেশন বাড়তেই থাকবে। তাই তাহলে কেমন? অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কটা একটা উল্টানো ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো, মানে ইনভার্টেড ইউ রিলেশনশিপ। উল্টানো ইউ মানে হলো যখন প্রতিযোগিতা খুব কম, ধরুন মনোপলি, তখন ইনোভেট করার তাগিদ কম থাকে। আবার যখন কম্পিটিশন সাংঘাতিক বেশি, তখন হয়তো কোনো ফার্মই আর রিস্ক নিতে চায় না ইনোভেট করার, কারণ জানে সফল হলেও অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে কপি করে ফেলবে, লাভ করা কঠিন হবে। ও, তার মানে মাঝামাঝি অবস্থায় ইনোভেশন সবচেয়ে বেশি হয়। এক্স্যাক্টলি। দেখা যায় একটা মাঝারি মানের বা নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা ইনোভেশনকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেয়। এটা কিন্তু পলিসি মেকারদের জন্য খুব জরুরি একটা ফাইন্ডিং। সত্যি তাই। তাহলে এই মডেলের প্রধান গুরুত্ব বা অবদানগুলো কি কি? কেন এটা এত প্রভাবশালী হলো? দেখুন, অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, এটা ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের গ্রোথ থিওরিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন থিওরির সাথে জুড়ে দিয়েছে। আগেই দুটো বিষয় বেশ আলাদা করে দেখা হতো। অ্যাগিয়ন হাউইট দেখালেন ফর্ম লেভেলের আচরণ, মার্কেট স্ট্রাকচার, এগুলো কিভাবে আসলে ম্যাক্রো গ্রোথকে প্রভাবিত করে। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়ত, তাদের মডেলটা শুধু খাতায় কলমে নয়, এটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডেটা দিয়ে টেস্ট করা যায়, মানে মাইক্রো লেভেল ডেটা, ফার্ম বা ইন্ডাস্ট্রির ডেটা দিয়ে। আর বহু পরীক্ষায় দেখা গেছে মডেলের প্রেডিকশনগুলো বাস্তবের সাথে বেশ ভালো মেলে। যেমন কোনো উদাহরণ? যেমন ধরুন, একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং হলো যে সব ইন্ডাস্ট্রিতে ফার্মের ঢোকা বেরোনো, এন্ট্রি এক্সিট বা চাকরি সৃষ্টি ধ্বংস, জব ক্রিয়েশন ডিস্ট্রাকশন বেশি হয়। সেসব ইন্ডাস্ট্রিতে সাধারণত প্রোডাক্টিভিটি গ্রোথও বেশি হয়। এটা ওই সৃজনশীল ধ্বংসের তত্ত্বকে সাপোর্ট করে। তার মানে এই মডেল পলিসি তৈরি তো খুব সাহায্য করতে পারে। অবশ্যই। যেমন ধরুন, পেটেন্ট আইন কতটা করা হবে বা কতদিনের জন্য সুরক্ষা দেবে, বাজারে মনোপলি আটকাতে কম্পিটিশন পলিসি কেমন হবে, R&Dতে সরকারি সাবসিডি দেওয়া উচিত কিনা, দিলে কতটা, এই সব জটিল পলিসি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অ্যাগিয়ন হাউইটের মডেল একটা খুব শক্তিশালী অ্যানালিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক দেয়। কিভাবে? কারণ মডেলটা দেখায় যে এই পলিসিগুলো ফার্মগুলোর ইনোভেট করার ইনসেন্টিভকে কিভাবে প্রভাবিত করে, আর তার ফলে লং টার্ম গ্রোথ কেমন হতে পারে। কিন্তু এই গ্রোথ প্রসেসের তো একটা অন্য দিকও আছে। আপনি বলছিলেন পুরনো কোম্পানি বা টেকনোলজি মার খায়, তার মানে তো কিছু লোকজনের ক্ষতিও হয়। একদম ঠিক। অ্যাগিয়ন হাউইটের মডেল এই দিকটাও কিন্তু এড়িয়ে যায় না, বরং স্পষ্ট করে তোলে। সৃজনশীল ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় অনিবার্যভাবেই সমাজে কিছু বিজয়ী বা উইনার্স থাকে, আবার কিছু পরাজিত বা লুজোসও থাকে। বা সেই কোম্পানিতে যারা কাজ করতেন, যাদের স্কিল হয়তো নতুন যুগে আর কাজে লাগছে না, তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হন, চাকরি হারাতে পারেন। আর এটাই ব্যাখ্যা করে কেন টেকনোলজির বিরুদ্ধে প্রায়ই একটা প্রতিরোধ দেখা যায়। ঠিক তাই, কারণ প্রবৃদ্ধির সুফলটা সমানভাবে সবার কাছে পৌঁছায় না, এর একটা সামাজিক মূল্য বা সোশ্যাল কস্ট থাকে। তার মানে গ্রোথ যেমন দরকার, তেমনি যারা এই প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়ছে তাদের সুরক্ষার কথাও ভাবতে হবে। অবশ্যই। এই মডেল আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গ্রোথের বেনিফিটগুলো যাতে সমাজের বেশি সংখ্যক মানুষ পায়, আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের জন্য যাতে উপযুক্ত সোশ্যাল সেফটি নেট থাকে, যেমন ধরুন বেকার ভাতা বা নতুন স্কিল শেখার জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা, সেটা দেখাও খুব জরুরি। না হলে কিন্তু টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়বে, যা হয়তো শেষমেশ গ্রোথের গতিকেই কমিয়ে দেবে। বুঝলাম।
তার মানে অ্যাগিয়ন আর হাউইটের এই ফ্রেমওয়ার্কটা খুব পাওয়ারফুল। এর ওপর ভিত্তি করে নিশ্চয়ই আরও অনেক কাজ হয়েছে। হ্যাঁ, প্রচুর। তাদের এই বেসিক মডেলটাকে ভিত্তি করে গত প্রায় 3 দশকে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে আর এখনও হচ্ছে। গবেষকরা তাদের মডেলটাকে আরও উন্নত করেছেন, আরও জটিল বিষয় যোগ করেছেন, যেমন মার্কেট স্ট্রাকচারের নানা দিক, টেকনোলজির ওয়েভ, বিভিন্ন ফার্মের পারফরমেন্সের পার্থক্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কিভাবে গ্রোথকে প্রভাবিত করে, বিভিন্ন সরকারি পলিসির আরও সূক্ষ্ম প্রভাব, অনেক কিছু। তাহলে যদি আমরা এই দুটো ধারার কাজকে মানে মুখির এবং অ্যাগিয়ন ও হাউইট পাশাপাশি রাখি, এদের মধ্যে মূল যোগসূত্রটা কোথায়? দেখুন, তাদের কাজগুলো ভীষণভাবে পরিপূরক, কমপ্লিমেন্টারি। মুকিরের যে ঐতিহাসিক আর প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ, সেটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কেন আর কিভাবে ইতিহাসে প্রথমবার টেকসই গ্রোথ শুরু হওয়া সম্ভব হলো। মানে ওই জ্ঞান আর প্রযুক্তির মেলবন্ধন, দক্ষ কারিগর, সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া, এইসব। আর অন্যদিকে অ্যাগিয়ন হাউয়েটের যে গাণিতিক মডেল, সেটা ব্যাখ্যা করে কিভাবে এই গ্রোথটা আধুনিক অর্থনীতিতে চলছে, কন্টিনিউ করছে, মানে ওই সৃজনশীল ধ্বংসের মাধ্যমে পুরনোকে সরিয়ে নতুনের নিরন্তর প্রতিযোগিতা আর উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে। তার মানে দুজনেই যদিও ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ইনোভেশন আর টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জকে গ্রোথের মূল ইঞ্জিন হিসেবে দেখছেন। একদম, এটাই হলো মূল কথা। আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তাদের এই গবেষণা কতটা প্রাসঙ্গিক? মানে এখনকার চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করতে তাদের কাজ থেকে আমরা কি শিখতে পারি? খুবই প্রাসঙ্গিক, অনেক দিক থেকেই। প্রথমত, মুকিরের কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয় ওই জ্ঞানার্জন, ফ্রি থিঙ্কিং, সায়েন্টিফিক রিসার্চের প্রতি সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় সাপোর্ট, এগুলো কতটা জরুরি। কোনো সমাজে যদি এগুলো কমে যায়, তাহলে কিন্তু লং টার্ম ইনোভেশন আর গ্রোথ ধাক্কা খাবে। দ্বিতীয়ত, অ্যাগিয়ন হাউইটের কাজ আজকের দিনের যে বিগ টেক কোম্পানিগুলো, তাদের যে মনোপলি পাওয়ার বাড়ছে, সেই ডিবেটে নতুন আলো ফেলে। প্রশ্নটা হলো, এদের কিভাবে রেগুলেট করা যায় যাতে কম্পিটিশনটা মরে না যায়, নতুন ইনোভেটররা উঠে আসতে পারে, কিন্তু আবার এই বড় কোম্পানিগুলোর ইনোভেট করার ক্ষমতাটাও যেন নষ্ট না হয়। সেই উল্টানো ইউ সম্পর্কটার কথা মাথায় রেখে ব্যালেন্স করা। ঠিক, সেই ব্যালেন্সটা খুঁজে বের করা আজকের পলিসি মেকারদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। আর ধরুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই, এই নতুন প্রযুক্তিকে কিভাবে দেখা যেতে পারে এদের তত্ত্বের ফ্রেমে? এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন। এআই একদিকে যেমন মুকিরের বলা ওই প্রস্তাবনামূলক জ্ঞান মানে সায়েন্স, আর বিধানমূলক জ্ঞান মানে টেকনোলজি, এদের মধ্যে যোগাযোগটাকে আরও ফাস্ট আর স্ট্রং করতে পারে। তেমনি এটা কিন্তু সৃজনশীল ধ্বংসের প্রক্রিয়াটাকেও অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। মানে এআই একদিকে যেমন অভাবনীয় গতিতে নতুন ইনোভেশনের রাস্তা খুলতে পারে, তেমনি অন্যদিকে বহু পুরনো চাকরি বা স্কিলকে খুব তাড়াতাড়ি অবসিলেট করে দিতে পারে। তার মানে এআই এর সুবিধা নেওয়ার পাশাপাশি এর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকতে হবে। অবশ্যই, এটা একটা বিরাট সামাজিক আর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। এবং অবশ্যই গ্রোথ কিভাবে লেবার মার্কেটকে এফেক্ট করে সেই প্রশ্নটা তো থাকছেই। হ্যাঁ, অ্যাগিয়ন হাউইটের কাজ খুব জোরের সাথে বলে যে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ আর ইকোনমিক গ্রোথ লেবার মার্কেটে একটা কন্টিনিউয়াস আলোড়ন তৈরি করে। কিছু চাকরি তৈরি হয়, কিছু চলে যায়। তাই কর্মীদের নতুন স্কিল শেখা, রিস্কিলিং আর বেকারত্বের ঝুঁকি সামলানোর জন্য ভালো পলিসি দরকার, যেমন ভালো এডুকেশন আর ট্রেনিং সিস্টেম, শক্তিশালী সোশ্যাল সেফটি নেট, এগুলো খুব জরুরি। যারা পিছিয়ে পড়ছে তাদের পাশে দাঁড়ানোটাও জরুরি। শুধু ন্যায্যতার জন্য নয়, এটা লং টার্ম সোশ্যাল স্টেবিলিটি আর ওভারঅল গ্রোথের জন্যও জরুরি। এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে এই 3 নোবেল বিজয়ের কাজ শুধু অর্থনীতির থিওরির জন্য নয়, আজকের দুনিয়ার পলিসি মেকিং আর ভবিষ্যতের পথ চলার জন্য খুব মূল্যবান। যারা আরও জানতে চান তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ? আমরা অবশ্যই বলবো, আগ্রহীরা যেন মূল রিসার্চারদের লেখাগুলো পড়েন অথবা তাদের কাজের ওপর লেখা ভালো সামারিগুলো দেখেন। আজকের আলোচনার ভিত্তি যে রিসার্চ পেপার বা বইগুলো, সেগুলোর লিঙ্ক আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। হ্যাঁ, সেটা খুব ভালো হবে। এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, আমরা সব শ্রোতাদের অনুরোধ করব, যদি এই বিষয়গুলো আপনাদের ভাবায়, তাহলে জোয়েল মোকির, ফিলিপ অ্যাগিয়ন আর পিটার হাউইটের এই দারুণ কাজগুলো পড়ার জন্য একটু সময় বের করুন। লং টার্ম ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ইনোভেশনের প্রসেস আর সমাজে তার প্রভাব বোঝার জন্য তাদের কাজ সত্যি অসাধারণ। একদম।
আজকের আলোচনা প্রায় শেষের দিকে, শ্রোতাদের জন্য একটা ভাবনা রেখে যেতে চাই শেষে। মকির আমাদের দেখালেন যে মানব ইতিহাসের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জিনিসটা আসলে কতটা বিরল ছিল, আর কতগুলো কঠিন শর্ত মিললে তবেই তা সম্ভব হয়েছিল। আর অ্যাগিয়ন ও হাউইট দেখালেন যে এই প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়াটা আবার কতটা ডাইনামিক, ডিসরাপটিভ আর নিরন্তর ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে চলে। এই দুটো দিক মাথায় রেখে আজকের পৃথিবীতে ইকোনমিক আর টেকনোলজিক্যাল প্রগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সোশ্যাল স্টেবিলিটি আর ফেয়ারনেস, মানে সামাজিক স্থিতিশীলতা আর ন্যায্যতার মধ্যে ভারসাম্য রাখার জন্য সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে, এই প্রশ্নটা আপনাদের ভাবনার জন্য রইল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कभी सोचा एक ऐसी दुनिया कैसी होती जहां गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस या गैलीलियो के थर्मोमीटर जैसे कमाल के आविष्कार तो होते, पर उनसे जिंदगी में कोई बड़ा लंबे समय तक चलने वाला बदलाव नहीं आता। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पर सदियों तक इंग्लैंड और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यही हुआ। लोगों की औसत आमदनी लगभग एक ही जगह अटकी रही। हाँ, वो आंकड़े दिखाते हैं जैसे 1300 से 1680 इंग्लैंड में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई। बिल्कुल। फिर लगभग 200 साल पहले अचानक कुछ बदला। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में तरक्की की ऐसी रफ्तार पकड़ी जो पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। हाँ। और वो भी लगातार। हाँ, वो ग्राफ एकदम ऊपर जाता है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? विकास जो पहले कभी कभार होने वाली बात थी, वो हमारी जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा कैसे बन गया? यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब हमें इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के काम में मिलते हैं। अच्छा। आज हम अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाने वाले अर्थशास्त्र विज्ञान में 2025 के स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार के विजेताओं जोएल मोकिर, फिलिप एजियन और पीटर हॉविट के शानदार योगदान पर बात करेंगे। उन्होंने बड़े अलग अलग तरीकों से ये समझने की कोशिश की है कि नई तकनीक और विचारों से लगातार आर्थिक तरक्की कैसे मुमकिन हुई। हाँ। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी आज की चर्चा उनके गहरे और विस्तृत काम का एक सरल सारांश है, खासकर उन श्रोताओं के लिए जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं या अपनी शोध यात्रा शुरू करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और इन विद्वानों से परिचय करना भी जरूरी है। पहले है जोएल मोकिर। इनका जन्म 1946 में नीदरलैंड के लीडन शहर में हुआ। जी। उन्होंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से 1974 में पीएचडी की। फिलहाल वो अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और फिर हैं फिलिप एजियन, जन्म 1956 में पेरिस, फ्रांस में, पीएचडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1987 में। अच्छा। और आजकल वो कॉलेज डी फ्रांस इंसेड जो फ्रांस में है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके में प्रोफेसर हैं। और तीसरे विद्वान हैं पीटर हॉविट, जन्म 1946 में कनाडा में। इन्होंने 1973 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और वो अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जी। और इस साल पुरस्कार की कुल राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। अच्छा। इसमें से आधा हिस्सा जोएल मोकिर को मिला है और बाकी आधा फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये बंटवारा भी दिलचस्प है। हाँ, ये उनके काम के जुड़ाव को भी दिखाता है। जैसे मोकिर बताते हैं कि ये तरक्की की गाड़ी शुरू कैसे हुई, और एगियन व होविट समझाते हैं कि ये लगातार चलती कैसे रहती है। बिल्कुल। और इस मौके पर एक खास बात कहना चाहूंगी। जी। इस हफ्ते हमने 2025 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के अद्भुत कामों को याद किया है। इस साल पुरस्कारों की घोषणा 6 अक्टूबर से शुरू हुई थी और आज 13 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के इस पुरस्कार के साथ ये सिलसिला खत्म हो रहा है। हाँ, ये हफ्ता काफी व्यस्त रहा। हाँ, तो ये हमारी उस सालाना परंपरा का हिस्सा है जो हमने पिछले साल शुरू की थी, और इस वर्ष की नोबेल विजेता उत्सव श्रृंखला का ये आखिरी पड़ाव है। जी। हम अपने सभी सुनने वालों, चाहे वो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हों या नए हों, उन सभी का पिछले 1 साल में मिले साथ और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप सबका समर्थन बहुत मायने रखता है। आप सबका साथ ही हमें इस तरह की ज्ञान भरी बातें आप तक लाने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। सही कहा। और जैसा हमने पहले कहा, ये चर्चा महज एक परिचय है। हाँ। हम सभी सुनने वालों से, चाहे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नहीं, गुजारिश करेंगे कि समय निकालकर इन विद्वानों के मूल और विचारोत्तेजक काम को जरूर पढ़ें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशनों के लिंक शो नोट्स में दिए गए हैं।
हम यहाँ एक कोशिश करेंगे कि उनके विचारों को सरल और सहज भाषा में पेश कर सकें, बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के। तो शुरुआत करते हैं जोएल मोकिर के काम से। मोकिर साहब ने इस बात पर गौर किया कि औद्योगिक क्रांति के दौरान, यानी करीब 1760 से 1830 के बीच, ये लगातार चलने वाली आर्थिक तरक्की आखिर शुरू कैसे हुई। वो एक आर्थिक इतिहासकार है, तो उनका नजरिया इतिहास की गहराइयों से आता है। उनका मूल सवाल यही है, हजारों साल के ठहराव के बाद ऐसा क्या खास हुआ कि तरक्की ने उड़ान भरी और फिर रुकी ही नहीं। बिल्कुल, और मोकिर का सबसे बड़ा सबक ये है कि तरक्की तभी टिकती है जब दो तरह का ज्ञान आपस में मिलता है और एक दूसरे को सहारा देता है। दो तरह का ज्ञान? हाँ, पहला जिसे वो प्रस्तावात्मक ज्ञान, प्रोपोजिशनल नॉलेज कहते हैं, यानी वैज्ञानिक समझ, प्रकृति कैसे काम करती है, इसका ज्ञान, चीजों के पीछे का क्यों जानना। अच्छा, मतलब थ्योरी वाला ज्ञान। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा है निर्देशात्मक ज्ञान, प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज, यानी व्यवहारिक तकनीक, काम करने का तरीका, कैसे कुछ बनाना है, प्रैक्टिकल नॉलेज। बिल्कुल। औद्योगिक क्रांति से पहले बड़े बड़े आविष्कार तो हुए, जैसे पवन चक्की या छपाई मशीन, मोकिर ने माइक्रो आविष्कार कहते हैं। लेकिन इनसे लगातार छोटे छोटे सुधारों, माइक्रो आविष्कार की झड़ी नहीं लगी। वजह, अक्सर लोग ये नहीं समझते थे कि कोई चीज काम क्यों कर रही है। अच्छा। जैसा मोकिर ने लिखा है, ये कुछ ऐसा था जैसे बिना यांत्रिकी के इंजीनियरिंग करना या बिना धातु कर्म समझे लोहा बनाना। तकनीक तजुर्बे पर आधारित थी, गहरी समझ पर नहीं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आविष्कार कर लेना काफी नहीं था, ये समझना भी जरूरी था कि वो काम क्यों कर रहा है। बिल्कुल। यही शायद प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट की भूमिका आती है, जिसके बारे में मोकिर औद्योगिक प्रबोधन, इंडस्ट्रियल एनलाइटमेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। प्रबोधन सिर्फ विज्ञान की तरक्की नहीं थी, ये सोच का बदलाव था। इसने ज्ञान को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, उसे सस्ता और सुलभ बनाया। इसने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक के पीछे का क्यों समझा जाए। ये क्यों पर जोर देना अहम था। बहुत अहम। और सबसे अहम बात, इसने उन लोगों को जोड़ा जो क्यों जानते थे, वैज्ञानिक, विचारक, और जो कैसे जानते थे, कारीगर, मैकेनिक। अच्छा, थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल। हाँ, ज्ञान को खुलकर साझा करने का चलन बढ़ा। एक जैसी वैज्ञानिक भाषा विकसित हुई। 17वीं और 18वीं सदी के आंकड़े बताते हैं कि वैज्ञानिक पत्रिकाएं तेजी से बढ़ी, जो इसी खुलेपन और ज्ञान के फैलाव का सबूत है। पर सिर्फ किताबी ज्ञान और वैज्ञानिक समझ से तो मशीनें नहीं बन जाती, उन्हें बनाने वाले हाथ भी तो चाहिए होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर मोकिर यांत्रिक क्षमता, मैकेनिकल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। यांत्रिक क्षमता? हाँ, इसका मतलब है हुनरमंद कारीगर, इंजीनियर, घड़ी बनाने वाले, धातु का काम जानने वाले, वो लोग जो नक्शे समझ सकते थे, प्रोटोटाइप बना सकते थे और नई मशीनों को लगाकर उन्हें ठीक रख सकते थे। मतलब स्किल्ड लोग। बिल्कुल। ये सिर्फ औसत हुनर की बात नहीं थी, बल्कि उन माहिर लोगों की जरूरत थी जो आविष्कारों को बेहतर बना सकें और उन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल के लायक बना सकें। मुकर और उनके साथियों के शोध से पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन में ऐसे कुशल कारीगरों की अच्छी खासी तादाद थी। अच्छा। उन अंग्रेजी इलाकों में जहां 18वीं सदी के अंत में ऐसे हुनरमंद लोग ज्यादा थे, वहीं 19वीं सदी के मध्य तक औद्योगिकरण भी ज्यादा तेजी से हुआ। तो स्किल्स का सीधा लिंक था औद्योगिकरण से। हाँ, और इसमें उस्ताद शागिर्द परंपरा, अप्रेंटिसशिप का भी बड़ा हाथ था, जहां व्यावहारिक हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। लेकिन नई चीजें आती हैं तो पुरानी चीजों से जुड़े लोगों को डर भी लगता होगा। क्या नई तकनीक का विरोध नहीं होता था? हाँ, बिल्कुल होता था। मोकिर बताते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई तकनीक आई है, उन लोगों ने उसका विरोध किया है जिनके मौजूदा हुनर, ज्ञान या कारोबार पर खतरा मंडराया हो। अच्छा। इन्हें निहित स्वार्थ कहते हैं। जैसे 14वीं सदी में कोलोन शहर के दर्जियों ने पिन बनाने की मशीन पर पाबंदी लगवा दी। 16वीं सदी में डेंजिग में रिबन बनाने वाली मशीन के आविष्कारक को शायद शहर के हुक्मरानों ने ही मरवा दिया था। अरे बाप रे। और 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में लुडाइट दंगे हुए, जहां कारीगरों ने गुस्से में आकर मशीनें तोड़ दी क्योंकि उन्हें अपनी नौकरियों का डर था। लुडाइट दंगे? हाँ, सुना है। तो फिर ब्रिटेन में ये विरोध कामयाब क्यों नहीं हुआ? वहां ऐसा क्या अलग था? अच्छा सवाल है। यही प्रबोधन काल का एक और असर दिखता है। क्या असर? इसने सिर्फ ज्ञान ही नहीं फैलाया, बल्कि एक ऐसी विकास की संस्कृति, कल्चर ऑफ ग्रोथ भी बनाई, जो बदलाव को स्वीकार करने को तैयार थी। विकास की संस्कृति?
हाँ, और साथ ही ऐसी संस्थाएं बनी जैसे ब्रिटिश संसद। वो भले ही आज के हिसाब से पूरी तरह लोकतांत्रिक ना हो, पर वो एक ऐसा मंच थी जहां अलग अलग हितों वाले समूह आपस में बात कर सकते थे, मोल भाव कर सकते थे और समझौते कर सकते थे। मतलब बातचीत की गुंजाइश थी। बिल्कुल। इससे समाज में बदलाव की गुंजाइश बनी, भले ही उससे कुछ लोगों को नुकसान हो रहा हो। इसकी तुलना चीन से की जाती है। 14वीं सदी तक चीन तकनीक में यूरोप से आगे था, पर वहां सरकारी नियंत्रण ज्यादा था, नए विचारों को उतनी खुली जगह नहीं मिली और धीरे धीरे नवाचार रुक गया। हाँ, वो नीधम पहेली वाली बात। जी, नीधम पहेली, नीधम पजल। मौकिर का तर्क है कि ये खुलापन और बदलाव को अपनाने वाली संस्थाओं की कमी की वजह से हुआ। समझ गए। तो मौकिर हमें बता रहे हैं कि तरक्की की गाड़ी स्टार्ट होने के लिए ज्ञान का सही मेल, हुनरमंद लोग और बदलाव को अपनाने वाला समाज चाहिए था। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि ये गाड़ी लगातार चलती कैसे रहती है, खासकर जब ये बदलाव इतने उथल पुथल भरे होते हैं। यहीं पर शायद फिलिप एगियन और पीटर हॉविट का काम आता है। हाँ, बिल्कुल। एगियन और हॉविट का ध्यान इसी बात पर है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में ये लगातार चलने वाली तरक्की कायम कैसे रहती है, जबकि ये प्रक्रिया इतनी विघटनकारी है। विघटनकारी मतलब डिसरप्टिव। हाँ, डिसरप्टिव। उन्होंने इसके लिए एक मजबूत सैद्धांतिक ढांचा दिया, जिसे रचनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। रचनात्मक विनाश। हाँ, ये शब्द मूल रूप से अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पेटर का है, लेकिन एगियन और हॉविट ने इसे गणितीय रूप देकर समझाया कि ये प्रक्रिया लगातार कैसे चलती है। रचनात्मक विनाश यानी कुछ नया बनाने के लिए पुराने को तोड़ना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर यही इसकी हकीकत है। मूल विचार यह है कि जब कोई नई बेहतर कंपनी या प्रोडक्ट बाजार में आता है, तो वो पुरानी कम कुशल कंपनी या प्रोडक्ट की जगह ले लेता है। अच्छा। नई तकनीक पुरानी को बेकार बना देती है और पुरानी कंपनियों का धंधा चौपट हो जाता है। ये बिजनेस चुराना जैसा है। बिजनेस चुराना, हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। कठोर है, पर यह पॉल रोमर के विचारों से थोड़ा अलग है, जहां नए उत्पाद अक्सर पुरानों के साथ साथ चलते हैं। एगियन हॉविट मॉडल में नया पुराने को हटा देता है। ये विनाशकारी जरूर लगता है, पर यही वो इंजन है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है और ज्यादा बेहतर चीजें और तरीके लाता है। ये बागवानी जैसा है, नए हरे पत्ते उगें, इसके लिए पुराने सूखे पत्तों को काटना पड़ता है। और क्या ये वाकई आज की अर्थव्यवस्थाओं में दिखता है, ये उथल पुथल? बिल्कुल दिखता है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं बहुत गतिशील हैं। अमेरिका के आंकड़े देखें तो हर साल लगभग 10% से ज्यादा कंपनियां खुलती हैं और उतनी ही बंद भी हो जाती हैं। 10%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, इसी तरह हर साल लाखों नौकरियां बनती हैं, पर लाखों खत्म भी होती हैं। जिन उद्योगों में नई कंपनियां ज्यादा आती हैं, वहां पुरानी कंपनियां जाती भी ज्यादा हैं। अच्छा, मतलब एंट्री और एग्जिट साथ साथ चलते हैं। ये जहां नौकरियां ज्यादा बनती है, वहां खत्म भी ज्यादा होती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये उथल पुथल, ये गतिशीलता उत्पादकता बढ़ाने से जुड़ी हुई है। कैसे? जब नई ज्यादा कुशल कंपनियां पुरानी कम कुशल कंपनियों की जगह लेती हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के दशकों में अमेरिका में यह गतिशीलता थोड़ी कम हुई है और इसी दौरान उत्पादकता वृद्धि भी धीमी पड़ी है। ये शायद आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये मॉडल कैसे काम करता है? क्या इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? कोशिश करते हैं। मान लीजिए बाजार में एक कंपनी है जिसका किसी उत्पाद पर एकाधिकार है। वो एक खास गुणवत्ता, क्वालिटी की चीज बना रही है और मुनाफा कमा रही है। ठीक है। अब इस कंपनी को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई दूसरी कंपनी इससे भी बेहतर गुणवत्ता वाली चीज लेकर आ सकती है और इसका सारा बिजनेस छीन सकती है। हाँ, कंपटीशन का डर। बिल्कुल। इस डर की एक संभावना है। हर बार जब कोई सफल नया आविष्कार होता है, तो उत्पाद की गुणवत्ता पहले से बेहतर हो जाती है। मान लीजिए 1.5 गुना या 2 गुना क्वालिटी इंप्रूव होती है। हाँ, और हर नया आविष्कार पिछले आविष्कारों से सीख कर ही होता है, यानी ज्ञान जुड़ता जाता है, जिसे कहते हैं कंधों पर खड़े होकर देखना। अब कोई कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर कितना खर्च करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे नया आविष्कार से कितने मुनाफे की उम्मीद है और उसका बिजनेस छिन जाने का खतरा कितना है। अच्छा, रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। बिल्कुल। यही संतुलन तय करता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी तेजी से नए आविष्कार होंगे और अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ेगी। पर एक सवाल मन में आता है, जो कंपनी पहले से ही बाजार में मजबूत है, वो खुद ही नया आविष्कार क्यों नहीं करती? उसे तो दूसरों से ज्यादा फायदा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। अर्थशास्त्री केनेथ एरो ने इसी पर प्रतिस्थापन प्रभाव
एरो रिप्लेसमेंट इफेक्ट की बात की थी। प्रतिस्थापन प्रभाव। हाँ, उनका कहना था कि जो कंपनी पहले से मजबूत है उसके पास नया आविष्कार करने का प्रोत्साहन किसी नई कंपनी से कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नया बेहतर उत्पाद लाएगी तो उसका अपना ही पुराना उत्पाद बिकना बंद हो जाएगा, यानी वो अपने ही मुनाफे को खा जाएगी, कैनिबलाइजिंग प्रॉफिट्स। अच्छा, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। कुछ वैसा ही। जबकि एक नई कंपनी के पास खोने को कुछ नहीं होता, सिर्फ पाने को होता है। हालांकि एगियन और हॉविट ने बाद में अपने मॉडलों को और सुधारा और ये भी दिखाया कि कैसे मौजूदा कंपनियां भी, खासकर जब मुकाबला कड़ा हो, कदम दर कदम सुधार करके नवाचार करती रहती हैं। तो क्या ये मॉडल ये भी बताता है कि बाजार में जो तरक्की हो रही है वो समाज के लिए सबसे अच्छी है या नहीं? हाँ, ये एक अहम पहलू है। मॉडल दिखाता है कि बाजार से होने वाली तरक्की समाज के लिए जरूरत से ज्यादा तेज भी हो सकती है और जरूरत से ज्यादा धीमी भी। अच्छा, दोनों तरफ। हाँ, बिजनेस चुराने वाला पहलू इसे जरूरत से ज्यादा तेज बना सकता है, क्योंकि हर नई कंपनी सिर्फ अपना फायदा देखती है, ये नहीं कि वो पुरानी कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी तरफ ज्ञान का फैलाव, नॉलेज स्पिलओवर्स, यानी एक आविष्कार से पैदा हुआ ज्ञान दूसरों के भी काम आता है, पर आविष्कारक को उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। ये तरक्की को धीमा कर सकता है। अच्छा, क्योंकि फायदा बढ़ जाता है। बिल्कुल। साथ ही एकाधिकार होने से कीमतें ज्यादा रहती हैं, जो भी ठीक नहीं है। इन सब वजहों से बाजार और समाज के लिए जो सबसे अच्छी तरक्की की रफ्तार है वो अलग अलग हो सकती है। तो ये तो काफी जटिल मामला है। हाँ, और इससे एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि बाजार में मुकाबला और नवाचार का रिश्ता सीधा नहीं है। सीधा नहीं है मतलब? ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा मुकाबला उतना ज्यादा नवाचार, बल्कि ये एक उल्टे यू जैसा हो सकता है, यानी बहुत कम मुकाबला भी खराब है और बहुत ज्यादा मुकाबला भी नवाचार को कम कर सकता है। उल्टा यू? ये तो नई बात है। हाँ, एक संतुलन की जरूरत होती है। ये तो बड़ी काम की बात है। इसका मतलब है कि सरकारों को बहुत सोच समझकर नीतियां बनानी होंगी। बिल्कुल। ये मॉडल प्रतिस्पर्धा नीति, यानी कंपनियों के बीच मुकाबले को कैसे नियंत्रित किया जाए, पेटेंट कानून, यानी आविष्कारों को कितना और कैसे संरक्षण दिया जाए, और R&D सब्सिडी, यानी शोध को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जैसे मुद्दों पर सोचने का एक ठोस आधार देता है। ये बताता है कि एक संतुलन साधना जरूरी है। सबसे अहम बात, ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की की इस प्रक्रिया में हमेशा कुछ जीतने वाले होते हैं और कुछ हारने वाले। हाँ, ये रचनात्मक विनाश वाली बात। बिल्कुल। जब पुरानी कंपनियां बंद होती हैं तो लोगों की नौकरियां जाती हैं। रचनात्मक विनाश समाज के एक हिस्से के लिए मुश्किल खड़ी करता है। तो इसका हल क्या है? इसीलिए सामाजिक सुरक्षा जाल, सोशल इंश्योरेंस और लोगों को नए हुनर सिखाने, रीट्रेनिंग के कार्यक्रम जरूरी हो जाते हैं, ताकि बदलाव का दर्द कम हो और तरक्की का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अगर हम दोनों नजरियों को मिलाएं तो मुखीर समझाते हैं कि ये तरक्की की मशीन शुरू कैसे हुई, ज्ञान, हुनर और खुले समाज के मेल से। हाँ। और एगियन हॉविट बताते हैं कि ये मशीन चलती कैसे रहती है, रचनात्मक विनाश, मुकाबला और सही प्रोत्साहन के दम पर, है ना? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये दोनों कहानियां मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। और ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं। लगातार तरक्की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। आज भी वही पुराने खतरे मौजूद हैं। नए विचारों को दबाना, विज्ञान और शोध को नजरअंदाज करना, या बड़ी कंपनियों को इतना ताकतवर हो जाने देना कि वो नए मुकाबले को रोक दें। ये चिंता की बात है। हाँ, लेकिन मौके भी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी नई तकनीकें शायद विज्ञान क्यों और तकनीक कैसे के बीच के रिश्ते को और तेज कर सकती हैं, जैसा मोकिर सोचते थे। AI का इसमें क्या रोल हो सकता है? वो शायद नए वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोजने और फिर उन्हें व्यवहारिक तकनीकों में बदलने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। अगर हम सही माहौल बना सकें तो ये तरक्की को और रफ्तार दे सकती है। बिल्कुल। इन ताकतों को समझना आज की बड़ी चुनौतियों जैसे धीमी पड़ती उत्पादकता, बढ़ती असमानता या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। इन विद्वानों का काम हमें इन मुश्किल सवालों से जूझने के लिए सोचने का नजरिया देता है। जी। हम एक बार फिर सभी सुनने वालों को, खासकर जो शोध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, इन तीनों नोबेल विजेताओं के मूल और गहरे काम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। उनके मुख्य कामों के लिंक शो नोट्स में है। इन्हें पढ़ना वाकई आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने देखा कि रचनात्मक विनाश से कुछ लोग पीछे छूटते हैं और विरोध होता है,
तो सवाल ये है कि समाज कैसे नवाचार से होने वाली तरक्की की जरूरत और इस प्रक्रिया से होने वाली सामाजिक उथल-पुथल को संभालने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना सकता है। ये बहुत अहम सवाल है। कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि तरक्की का साथ ज्यादा से ज्यादा लोग दें? ये सवाल मौकिर के विरोध वाले मुद्दे और एगीन हॉविट की नीतियों वाली चर्चा को जोड़ता है और आज की दुनिया के लिए शायद सबसे अहम सवालों में से एक है। इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। Tänk dig att du levde i 1400-talets England. Visst, man har uppfunnit saker som boktryckarkonsten och vindkraftverk. Men ekonomin, levnadsstandarden alltså, den rörde sig knappt framåt under århundraden. Spola sen fram till de senaste 200 åren. Länder som Storbritannien, USA, en nästan explosionsartad ökning av välståndet. Trots världskrig och finanskriser. Vad var det egentligen som hände? Hur kunde ekonomisk tillväxt plötsligt bli uthållig, nästan självgående? Den gåtan är liksom kärnan i vad vi ska titta närmare på idag. Forskningen bakom 2025 års Sveriges Riksbanks Pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Precis, och det här blir en sorts sammanfattning av det viktiga arbete som årets 3 pristagare har gjort. Deras idéer, de hakar verkligen i varandra på ett fascinerande sätt. Pristagarna är alltså Joel Mokyr, född 1946 i Leiden, Nederländerna. Han doktorerade vid Yale 1974. Professor vid Northwestern University i USA och Tel Aviv University i Israel. Sen har vi Philippe Aghion, född 1956 i Paris, doktorerade vid Harvard 1987, professor vid Collège de France och NCIAD i Frankrike och även vid London School of Economics. Och Peter Howitt, född 1946 i Kanada, doktorerade vid Northwestern 1973 och är professor vid Brown University i USA. Prissumman är ju 11 miljoner svenska kronor. Joel Mokyr får hälften och Aghion och Howitt delar på den andra halvan. Och deras forskning ger oss verkligen nya glasögon för att se på själva motorn i modern ekonomisk tillväxt, innovation och teknisk utveckling alltså. De bygger ju vidare på tidigare pristagare som Robert Solow och Paul Romer, absolut. Men de borrar liksom djupare i frågorna om hur den här uthålliga tillväxten faktiskt uppstod historiskt sett. Och varför den fortsätter mala på, även när nya idéer hela tiden slår ut gamla etablerade. Just det. Och den här genomgången är ju den sista i vår speciella uppmärksamhet kring årets Nobelpriser här hos oss. Tillkännagivandena har ju skett löpande mellan 6 och 13 oktober. Det har blivit en fin tradition för oss. Vi startade ju förra året. Och vi vill passa på att rikta ett varmt tack till dig och alla andra som lyssnar. Oavsett om du följt oss länge eller precis hittat hit, tack för ert stöd under året. Och vare sig du prenumererar eller inte så hoppas vi verkligen att du kanske får tid att själv utforska pristagarnas egna arbeten. De är väldigt insiktsfulla. Vi lägger länkar i beskrivningen till den här genomgången. Vårt mål här är ju att försöka göra deras idéer, som ibland kan vara lite komplexa, mer tillgängliga. Särskilt för dig som kanske är nyfiken på forskningsvärlden eller står i startgroparna för en egen akademisk resa. Vi ska försöka förklara så rakt och enkelt som möjligt. Okej, då sätter vi igång. Först ut, Joel Mokyr blev just den industriella revolutionen i Storbritannien startskottet för en varaktig tillväxt. Tidigare blomstringsperioder som renässansens Italien eller Hollands guldålder på 1600-talet hade ju också sett innovationer. Men tillväxten dog liksom ut. Varför? Ja, precis. Mokyrs analys pekar på att det tidigare saknades avgörande kopplingar. Visst fanns det stora makrouppfinningar som du nämnde, vindkraften, tryckpressen och massor av små mikrouppfinningar, alltså gradvisa förbättringar. Men de här 2 nivåerna, de samspelade liksom dåligt. Man visste ofta att något fungerade, men sällan varför. Mokyr har en talande beskrivning: ingenjörskonst utan mekanik, järnframställning utan metallurgi. Utan den där djupare förståelsen blev det svårt att systematiskt fortsätta förbättra och kombinera tekniker. Och då stannade tillväxten av. Men så kom upplysningen in i bilden. Mokyr pratar om en industriell upplysning.
Vad menar han med det? Var det bara filosofer i fina salonger? Inte bara. Nej, det var ett helt nytt sätt att se på kunskap och framförallt hur den skulle spridas. För det första en mycket starkare koppling mellan det Mokyr kallar propositionell kunskap, alltså den teoretiska förståelsen, vetenskapen, varför något fungerar. Och preskriptiv kunskap, det praktiska kunnandet, hantverket, hur man gör något. Upplysningen förespråkade öppen vetenskap. Man skulle dela med sig av resultat, använda systematiska metoder, utveckla ett gemensamt språk. Det gjorde kunskapen mer tillgänglig, lättare att ifrågasätta, testa och bygga vidare på. Det blev en slags positiv spiral kan man säga, mellan teori och praktik. Kan vi se något konkret exempel på den här kopplingen? Blir det tydligare då? Absolut. Tänk på utvecklingen av hygien, sterilisering inom sjukvården. Redan på 1840-talet fanns det ju läkare som Holmes och Semmelweis som argumenterade för handtvätt för att minska dödligheten. Men de mötte enormt motstånd. Varför då? Ja, delvis för att de inte fullt ut kunde förklara varför det funkade. Det lät kanske lite konstigt för folk då. Det var först när Pasteurs och Listers vetenskapliga arbete kom på 1860-talet med bakterieteorin och så, som det fanns en vetenskaplig förklaring och då slog metoderna igenom på riktigt och blev standard. Den typen av koppling, den blev mycket vanligare under den här industriella upplysningen. Okej, jag förstår. Men idéer och vetenskapliga förklaringar, det räcker ju inte, eller hur? Någon måste ju faktiskt kunna bygga och använda de nya maskinerna och metoderna. Exakt. Helt avgörande. Och det är Mokyrs andra nyckelpoäng, mekanisk kompetens. Han menar att Storbritannien hade en unik fördel. Det fanns ovanligt många skickliga hantverkare, ingenjörer, mekaniker, folk som var duktiga på att pilla och fixa, som kunde läsa en ritning, bygga en prototyp, förbättra en maskin. De praktiska genierna liksom. Ja, precis. Tänk på de kända namnen som James Watt och Richard Arkwright, absolut. Men framförallt på alla de mindre kända. Ormakarna, instrumentmakarna, metallarbetarna. Deras färdigheter, ofta inlärda genom lärlingssystem, inte nödvändigtvis formell skola. De var helt avgörande. Mokyr betonar just den övre svansen av kompetensfördelningen. Det behövdes en kritisk massa av riktigt skickliga personer. Och det här går att se i data också, säger du? Det är inte bara en känsla? Nej, han har verkligen grävt i arkiven. Han visar till exempel en koppling mellan områden som hade många vattenkvarnar redan på 1000-talet. Det kommenterades i Domesday Book, 1086 faktiskt. Och var den tidiga industrialiseringen senare tog fart. En annan studie av engelska grevskap mellan 1760 och 1830 visar att det var just tillgången på hög mekanisk kompetens, inte till exempel höga löner, som starkast förklarade vilka områden som industrialiserades först. Det var kompetensen som drog. Fascinerande. Så vi har kopplingen teori, praktik och vi har de skickliga hantverkarna. Vad mer krävdes då för att få igång den här uthångliga tillväxten? Den sista och kanske svåraste pusselbiten. Ett samhälle som var tillräckligt öppet för förändring. Förändring är ju jobbigt. Ja, det skapar ju oro. Precis. Nya uppfinningar är nästan alltid ett hot mot någon. Mot gamla yrkesgrupper, mot etablerade företag, mot traditionella maktstrukturer. Mokyr ger massor av exempel på motstånd genom historien. Skräddare i köl på 1300-talet som förbjöds använda vissa maskiner. Vävare som attackerade uppfinnaren John Kay på 1700-talet. Och förstås luditernernas maskinstormningar i början av 1800-talet. Det var inte populärt överallt. Så hur lyckades man då överbrygga det här motståndet just i Storbritannien vid den här tiden? Var det mindre motstånd där, eller? Kanske inte nödvändigtvis mindre motstånd, men upplysningens idéer bidrog nog till en mer positiv syn på framsteg och förändring. En slags tillväxtkultur. Och minst lika viktigt, menar Mokyr, var institutionerna. Det brittiska parlamentet, även om det var långt ifrån dagens demokratier, fungerade ändå som en arena där konflikter mellan olika intressegrupper kunde hanteras. Kompromisser kunde nås. Det gjorde det lättare där, oftare än i många andra länder vid den tiden, att faktiskt driva igenom förändringar som gynnade ny teknik, även om det skadade vissa etablerade intressen.
Det banade liksom väg för den process som ekonomen Joseph Schumpeter senare skulle kalla, kreativ förstörelse. Det är verkligen spännande hur de här 3 delarna, synen på kunskap, den praktiska skickligheten och samhällets institutionella förmåga att hantera förändring verkar ha samverkat just där och då. Mokyr bygger ju sitt argument med en imponerande bredd. Stora jämförelser som varför Kina, som låg långt före teknologiskt, tappade sitt försprång, till detaljerade fallstudier och analyser av patent och vetenskapliga publikationer. Så hans kärnbudskap är alltså, för att tillväxt ska bli uthållig räcker inte med uppfinningar. Du behöver en kultur som kopplar ihop varför, vetenskap, med hur, praktik. Du behöver folk som kan bygga och fixa och ett samhälle som tillåter och hanterar den oundvikliga förändringen. Precis så, exakt. Han visar att medan upplysningens idéer spreds över Europa så var det kombinationen av dessa idéer med den utbredda mekaniska skickligheten och de relativt flexibla institutionerna som gav Storbritannien ett avgörande försprång. Det var liksom hela paketet. Okej, så om Mokyr förklarar startskottet och de historiska förutsättningarna, vad bidrar då Philippe Aghion och Peter Howitt med? De fokuserar mer på mekanismen bakom den fortsatta tillväxten i moderna ekonomier, stämmer det? Exakt. De tittar på ekonomier som våra idag och konstaterar att den där ganska jämna, stabila tillväxttakten vi ser på ytan, på makronivå, den döljer en enorm turbulens och omstrukturering på mikronivå. Tittar man på data från länder som USA till exempel ser man att varje år startas ungefär 10% nya företag och ungefär lika många läggs ner. 10%? Det är ju jättemycket. Det är en otrolig omsättning. Miljontals jobb skapas och försvinner hela tiden. Inte bara genom att folk byter bransch utan i hög grad inom samma bransch. Det pågår en ständig process av omfördelning. Och det är den här processen Aghion och Howitt fångade i sina modeller. Den här turbulensen. Ja, precis. De utvecklade en teoretisk ram för att förstå hur den här dynamiken driver tillväxt. De kallar det, i linje med Schumpeter som vi nämnde, för tillväxt genom kreativ förstörelse. Kärnan i deras idé är att innovation väldigt ofta innebär att något nytt och bättre ersätter det gamla. En ny produkt, en ny process gör en befintlig omodern. Företaget som kommer med innovationen tar marknadsandelar och vinster från de gamla företagen, som kanske krymper eller till och med tvingas lägga ner. Det handlar alltså inte bara om att nya saker läggs till utan om en aktiv utkonkurreringsprocess. Hur ser det ut i deras modell mer konkret? Försök förklara enkelt. Okej. I den grundläggande modellen från 1992 tänker de sig att företag konkurrerar om att förbättra kvaliteten på produkter. Om ett företag lyckas med en innovation, och chansen att lyckas beror på hur mycket de satsar på forskning och utveckling, FU alltså, då får de ett tillfälligt monopol på en produkt med högre kvalitet. Säg en kvalitetsförbättring. Men, och det här är centralt, företaget lever ständigt under hotet att själv bli omsprunget, utkonkurrerat av nästa innovation inom samma område. Det finns alltid en risk att bli omsprungen. Ju högre den risken är, desto mindre är företaget värt idag. Det påverkar ju hur man tänker kring investeringar och sånt. Så det finns en inbyggd spänning här mellan viljan att skapa nytt och rädslan för att själv bli omsprungen. Men också en konflikt mellan nya utmanare och de som redan är på toppen. De som sitter på monopolet. Ja, absolut. Och modellen visar också något intressant. De företag som redan är ledande, de som tjänar pengar på den befintliga tekniken, de har ofta mindre anledning att själva satsa på de riktigt stora omvälvande innovationerna. Varför det? Man tycker ju de borde ha resurserna. Jo, men om de gör en stor innovation, då skulle de ju konkurrera med sig själva. Förstöra värdet av sina nuvarande produkter och vinster. De har mer att förlora helt enkelt. Det här brukar kallas Arrow Replacement Effect, efter ekonomen Kenneth Arrow som pekade på detta redan tidigare. Men Aghion och Howitt byggde in det i en dynamisk tillväxtmodell på ett nytt sätt. När man sedan sätter ihop de här idéerna i en större modell av hela ekonomin, där man också tar hänsyn till hur hushåll sparar och konsumerar och så kan man visa hur den här mikrodynamiken, konkurrens, innovation, företag som föds och dör, faktiskt kan leda till en stabil, positiv tillväxttakt för ekonomin som helhet.
Tillväxten blir då direkt kopplad till hur ofta innovationer sker och hur stora kvalitetsförbättringarna är i genomsnitt. Innovationstakten och innovationsstorleken kan man säga. Men är den här processen, den här kreativa förstörelsen, alltid bra för samhället då? Leder den till den bästa möjliga tillväxttakten, den optimala? Inte nödvändigtvis. Och det är en viktig poäng i deras forskning. Modellen hjälper oss att se flera anledningar till varför marknadens innovationstakt kan skilja sig från vad som vore optimalt för samhället som helhet. Det finns en dragkamp här kan man säga. Å ena sidan har vi den där business stealing-effekten. Företag innoverar ju för att ta marknaden och få monopolvinster. De bryr sig inte så mycket om att de samtidigt slår ut ett annat företag och förstör dess värde. Det här kan leda till att företag har för starka incitament att satsa på innovationer som mest handlar om att stjäla vinster från andra snarare än att skapa verkligt nytt värde för samhället. Kanske blir det för mycket störande innovation ur samhällets synvinkel. Okej, det är ena sidan. Vad är den andra? Å andra sidan kan incitamenten vara för svaga. Det beror på det som kallas kunskapsspillovers. När ett företag innoverar skapas ny kunskap. Den kunskapen kan liksom sippra ut och användas av framtida uppfinnare för att skapa nästa generationens innovationer. Det bygger ju på varandra. Man står på varandras axlar. Precis. Men det ursprungliga företaget får sällan full kompensation för det framtida värdet av den kunskap de skapat. Speciellt eftersom de själva riskerar att bli utkonkurrerade. De äger inte hela den positiva effekten på framtida kunskap. Det här kan leda till för lite innovation ur samhällets synvinkel. Ingen vill riktigt betala för att skapa kunskap som andra sedan kan utnyttja gratis. Och dessutom, glöm inte monopolet i sig. När en lyckad innovation ger ett monopol sätts priset högre än produktionskostnaden. Det gör att färre använder produkten än vad som vore optimalt socialt sett. Så sammantaget är det inte alls säkert att marknadens spontana tillväxttakt är en lufta. Den kan vara både för hög eller för låg. Det är komplicerat. Verkligen. Och den här grundmodellen från 1992, den har väl sedan utvecklats och förfinats otroligt mycket. Det här är ju ett stort forskningsfält nu. Ja, enormt mycket. Både av Aghion och Howitt själva och av en hel generation forskare efter dem. Det har exploderat. Man har byggt in mer realistisk konkurrens, till exempel situationer där företag ligger ganska jämsides, neck to neck som det heter, och tävlar stegvis om att få ett litet försprång istället för att bara slå ut varandra helt. Man har analyserat olika typer av innovationer, små gradvisa förbättringar kontra stora revolutionerande genombrott. Som ångmaskinen, elektriciteten eller kanske AI idag. General Purpose Technologies. Man har också tagit hänsyn till att företag är olika stora och små, gamla och unga och undersökt hur även etablerade företag har skäl att innovera, kanske för att försvara sin position eller för att expandera. Det här har skapat ett väldigt rikt forskningsfält som verkligen binder ihop makroekonomisk tillväxtteori med hur företag faktiskt beter sig och hur konkurrens fungerar på olika marknader. Industriell organisation möter makro, kan man säga. Och teorierna har kunnat testas mot data. Till exempel har man studerat sambandet mellan konkurrens och innovation och funnit stöd för att det ibland kan vara ett slags upp- och nedvänt U. Både för lite och för mycket konkurrens kan faktiskt hämma innovationsviljan. Precis som vissa versioner av teorin förutspår. Det är inte linjärt. Kan den här forskningen också hjälpa oss att förstå saker som händer idag? Jag tänker på diskussionen om minskad dynamik och lägre produktivitetstillväxt i många västländer. De senaste decennierna, det pratas ju mycket om det. Ja, absolut. Ramverket som Aghion, Howitt och andra utvecklat ger oss verktyg att analysera sådana trender. Helt klart. Man kan till exempel undersöka om ökad marknadskoncentration, alltså färre och större företag, har lett till minskade incitament för innovation. Eller om dynamiken i vilka företag som växer och krymper har förändrats. Det ger en grund för att förstå möjliga orsaker till den observerade nedgången i företagsdynamik och produktivitetstillväxt, som setts i många OECD-länder sedan början av 2000-talet. Det är ett aktivt forskningsområde just nu. Så om vi knyter ihop säcken här. Vad är det viktigaste du som lyssnar kan ta med sig från de här pristagarnas forskning? Vad är kärnan? Jag tycker det handlar om att förstå
att den ekonomiska tillväxt vi ofta tar för given, den är inte någon naturlag. Inte alls. Mokyr visar oss de historiska förutsättningarna som krävdes för att den ens skulle komma igång. Den där speciella kopplingen mellan vetenskap och praktisk tillämpning, tillgången på rätt sorts kompetens och ett samhälle som accepterade och kunde hantera omvälvande förändringar. Det var liksom grundplattan. Aghion och Howitt ger oss sedan mekaniken för hur processen håller sig igång idag. Genom den här ständiga, ganska hårda processen av kreativ förstörelse och konkurrens. Det är så det funkar nu. Det ger ju ett annat perspektiv på nyhetsflödet också, tänker jag. Man förstår kanske lite bättre varför vissa företag plötsligt växer explosionsartat, medan andra som verkade stabila försvinner. Och varför ny teknik som AI väcker både enorma förhoppningar och, djup oro för jobb och framtid. Det är precis den här dynamiken. Precis. Och det belyser varför politiska diskussioner om saker som konkurrenslagstiftning, statligt stöd till forskning och utveckling, utbildningssystemets utformning eller hur vi bygger sociala skyddsnät för att hantera omställningar är så otroligt viktiga. Det handlar ju om att försöka forma spelreglerna för den här dynamiska processen. Att uppmuntra de positiva krafterna och mildra de negativa konsekvenserna av den ständiga förändringen. Det är en balansgång. Och för dig som kanske funderar på en egen forskningsbana visar det också hur kunskap kan växa fram på olika sätt. Genom att tålmodigt kräva i historien som Mokyr eller genom att bygga och testa teoretiska modeller som Aghion och Howitt. Och hur de här grundläggande idéerna faktiskt kan ha stor betydelse för att förstå och kanske påverka samhällsutvecklingen. Det är inte bara teori för teorins skull. Så för att sammanfatta. Årets ekonomipristagare har gett oss avgörande pusselbitar för att förstå modern ekonomisk tillväxt. Det är ett historiskt sett nytt fenomen, bara drygt 200 år gammalt, vilket är ganska kort tid egentligen. Det drivs av en oavbruten ström av innovationer som ständigt stöper om ekonomin genom kreativ förstörelse. Och det gräver en komplex mix av vetenskapliga framsteg, praktisk skicklighet och ett samhälle som förmår att både uppmuntra och hantera den förändring som följer. Det är många delar som ska funka ihop. Vilket kanske leder oss till en sista tanke jag funderar vidare på. Något att ta med sig. Och Mokyr visar hur skör grunden för tillväxt historiskt sett var. Och Aghion och Howitt visar hur den pågår genom ständig omvälvning. Hur robust är då egentligen vår nuvarande tillväxtmodell? Hur motståndskraftig är den inför de enorma utmaningar vi står inför idag? Jag tänker på klimatförändringarna som kräver gigantiska omställningar, risken för resursbrist eller de djupa sociala ekonomiska effekterna av AI. Finns det en risk att de positiva kopplingarna mellan vetenskap, teknik och samhälle bryts igen? Kanske genom ökat motstånd mot förändring eller minskat förtroende för vetenskapen? Eller kommer just dessa utmaningar att tvinga fram nya former av användbar kunskap och nya vågor av kreativ förstörelse som faktiskt leder oss mot lösningar? Det är ju den stora frågan. Det är verkligen en stor och viktig fråga att bära med sig. Vi hoppas att den här genomgången har gett dig nya insikter och väckt din nyfikenhet. Kom ihåg att du hittar länkar till pristagarnas centrala arbeten i beskrivningen om du vill gå vidare på egen hand och fördjupa dig. Tack för att du lyssnade idag. Pendant des millénaires, l'humanité innove. L'imprimerie, le gouvernail, le moulin à vent, on a des inventions majeures, vraiment. Oui, tout à fait. Et pourtant, si on regarde la courbe de la richesse mondiale, c'est quasi plat. Pendant des siècles. Une longue stagnation. Et puis, soudainement, il y a 200, peut-être 250 ans, quelque chose bascule. Oui, un vrai changement. Une croissance économique forte, continue, s'installe dans certains pays. Ça change absolument tout. Alors, la question, c'est comment on explique cette rupture, ce décollage si soudain après tout ce temps? C'est vraiment une des questions fondamentales en économie et même en histoire. Et c'est justement pour leurs travaux qui éclairent cette énigme que le prix 2025 de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel a été attribué cette année. D'accord. Et donc notre discussion aujourd'hui, elle se nourrit de l'ensemble de leurs recherches. C'est une sorte d'exploration, on va dire, pour comprendre un peu les moteurs de notre prospérité actuelle. On va donc se pencher sur les contributions de 3 chercheurs exceptionnels. Mokyr Philippe Aghion et Peter Howitt.
Leurs travaux sont distincts, mais en même temps, ils forment un tout assez cohérent pour aborder ce grand mystère, quoi. Oui, c'est ça. Alors, on peut peut-être les présenter rapidement. Oui, bonne idée. Joël Mokyr, d'abord, né en 1946 aux Pays-Bas. Il a eu son doctorat à Yale en 1974. Et aujourd'hui, il est professeur à Northwestern University aux États-Unis et aussi à l'école d'économie Eitan Berglas à l'université de Tel Aviv en Israël. D'accord. Et Philippe Aghion, lui, il est né en France, à Paris, en 56. Ah oui. Son doctorat, il l'a eu à Harvard en 87, et il partage son temps, je crois, entre le Collège de France et l'INSEAD à Paris. C'est ça. Et la London School of Economics. Un parcours très international. Très. Et enfin, Peter Howitt. Né en 46 au Canada, il a eu son doctorat à Northwestern en 73. Ah, la même université que Mokyr? Intéressant. Oui. Et lui, il est professeur à Brown University aux États-Unis. Et le prix lui-même, c'est 11 millions de couronnes suédoises. Il est partagé d'une façon particulière. Oui, c'est ça. La moitié pour Joël Mokyr, seul, D'accord. et l'autre moitié conjointement pour Philippe Aghion et Peter Howitt. Ce qui souligne à la fois leurs apports spécifiques et leur complémentarité sans doute. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette exploration, elle clôture une semaine un peu spéciale sur notre chaîne. Ah oui, on a mis en lumière des travaux des différents lauréats Nobel 2025, dont les noms ont été annoncés jour après jour, là, du 6 au 13 octobre. C'est vrai, c'est une tradition qu'on a lancée l'an dernier. Exactement. C'est une tradition annuelle maintenant. Absolument. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui nous suivent. Oui. Que ce soit depuis le début ou plus récemment, franchement, votre soutien depuis 1 an, ça nous touche beaucoup et ça nous encourage vraiment à continuer. Tout à fait. Merci beaucoup à tous. Alors, on plonge dans le vif du sujet avec Joël Mokyr pour commencer. Allons-y. Son approche, c'est celle d'un historien de l'économie, c'est ça? C'est ça. Il fouille le passé pour essayer de déceler les ingrédients un peu uniques qui ont permis à la révolution industrielle de ne pas être juste un feu de paille, quoi. Mais bien le début d'une ère de croissance durable. Et alors, c'est quoi l'ingrédient clé pour lui? Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence à cette époque? Mokyr, il met en lumière une interaction qui devient nouvelle ou en tout cas beaucoup plus systématique, plus puissante. C'est l'interaction entre la science, le savoir théorique, comprendre pourquoi ça marche, D'accord. ce qu'il appelle la connaissance propositionnelle, et la technologie appliquée, c'est-à-dire le savoir-faire pratique. Comment on fait les choses. Ça, c'est la connaissance prescriptive. Ah, c'est intéressant comme distinction. Donc avant, on avait d'un côté les savants qui pensaient et de l'autre les artisans qui fabriquaient. C'est un peu ça. Mais ça ne communiquait pas assez. Disons que les échanges existaient, bien sûr, mais ils étaient souvent sporadiques ou un peu limités. Mokyr reprend cette idée de connaissance utile empruntée à Simon Kuznets. L'idée, c'est que pour croître, une économie doit accumuler et surtout appliquer des savoirs qui sont pertinents pour la production. Et ce qui change radicalement autour du XVIIIe siècle, c'est la fluidité, l'intensité de la circulation entre ces deux types de savoirs. D'accord. Et comment ça s'améliore concrètement cette circulation? Alors, Mokyr parle des lumières industrielles, Industrial Enlightenment. Il ne faut pas voir ça seulement comme les grandes idées philosophiques. Non, bien sûr. C'est aussi toute une culture qui valorise la méthode scientifique, l'expérimentation et surtout, point très important, la diffusion du savoir. Ah oui. Pensez à la multiplication des journaux scientifiques, des sociétés savantes, des encyclopédies. L'accès à la connaissance devient moins cher, plus facile, et surtout les savants et les artisans commencent à se fréquenter dans les mêmes cercles, à lire les mêmes choses, parfois à collaborer directement. Ce qui crée une sorte de boucle vertueuse, j'imagine. Exactement, c'est ça. Une découverte scientifique, la connaissance propositionnelle, peut inspirer une nouvelle technique, donc la connaissance prescriptive. Et inversement, les problèmes rencontrés par les artisans, les ingénieurs, en essayant de faire marcher une machine, ça peut stimuler de nouvelles recherches scientifiques pour comprendre les principes qui sont derrière. D'accord. C'est cette boucle de rétroaction positive qui devient de plus en plus forte, qui est vraiment au cœur du décollage, selon Mokyr. Et il suffit pas d'avoir les idées, il faut aussi des gens capables de les mettre en œuvre, j'imagine. C'est le deuxième pilier. C'est crucial chez Mokyr. L'importance de ce qu'il appelle la compétence mécanique. Il insiste vraiment sur le rôle fondamental des artisans très qualifiés, des mécaniciens, des ingénieurs. Les fameux bricoleurs. Oui, ces tinkers, ces tweakers, comme il les appelle avec affection. Ce sont ces gens qui sont capables de comprendre un plan, d'adapter une machine, de l'améliorer au quotidien par petites touches.
Les micro-inventions. Voilà. Et ces micro-inventions, cumulées, elles font souvent plus pour la productivité que la grande macro-invention de départ. Ce qui voudrait dire que l'avantage britannique, par exemple, il viendrait pas forcément de la supériorité de ses savants, les Lumières. C'était pan-européen, après tout. Oui, c'est une bonne remarque. Mais peut-être de cette armée d'artisans hyper complétants. C'est une des thèses fortes de Mokyr, oui. Il suggère que la Grande-Bretagne avait une densité particulièrement élevée de ses compétences pratiques. Et ça, c'était nourri par un système d'apprentissage qui était apparemment efficace. D'ailleurs, des travaux quantitatifs assez récents, qu'il a co-signés, tendent à montrer que les régions anglaises qui ont le mieux réussi leur industrialisation, c'était pas forcément celles où les salaires étaient les plus bas. Ah non. Non, mais plutôt celles où les compétences mécaniques étaient les plus élevées, même si les salaires étaient un peu plus faibles. C'est une idée assez forte pour comprendre les ressorts locaux de ce phénomène. Ça montre bien, pour quelqu'un qui commence dans la recherche, par exemple, comment l'histoire économique, elle peut combiner l'analyse qualitative des idées, des institutions, et puis l'analyse quantitative avec des données pour tester des hypothèses très précises. Tout à fait. Et il y a un troisième élément chez Mokyr qui est important aussi. Lequel ? C'est la nécessité d'avoir une société capable d'absorber le changement technologique, parce que l'innovation, ça dérange. Oui, ça bouscule. Ça rend des compétences obsolètes, ça menace des positions acquises, des rentes. Il cite l'exemple des Ludites, bien sûr, mais aussi d'autres exemples plus anciens, comme les tailleurs de Cologne, qui s'opposent à une machine à tisser, je crois. Et comment on surmonte cette résistance alors ? Parce qu'elle est naturelle quelque part. Les institutions, elles jouent un rôle clé. Mokyr analyse comment le système politique britannique, avec le Parlement notamment, a permis, non sans conflit, attention, J'imagine. mais a permis quand même de négocier et finalement d'adopter des technologies qui bénéficiaient à l'ensemble de la société, même si elles nuisaient à certains groupes à court terme. Alors que dans d'autres endroits, Dans d'autres contextes, comme en Chine impériale par exemple, malgré son avance technologique passée, c'est la fameuse énigme de Needham, oui, ou même dans certaines régions d'Europe, la résistance des intérêts établis, ou peut-être le manque de soutien institutionnel, ça a pu freiner l'innovation de manière durable. c'est fascinant de voir comment ces trois éléments, la boucle savoir théorique pratique, les compétences techniques et puis les institutions ouvertes au changement, comment tout ça s'emboîte pour expliquer pourquoi la croissance soutenue a démarré là et à ce moment-là. Exactement. Donc, si Mokyr nous aide à comprendre le comment ça a commencé de façon durable, la question suivante, c'est comment ce moteur de l'innovation, il continue de tourner aujourd'hui dans nos économies modernes. Malgré les perturbations constantes qu'il engendre. Voilà. Et c'est là que les travaux de Philippe Aghion et Peter Howitt deviennent absolument essentiels. Eux, ils se concentrent plus sur la dynamique actuelle de la croissance, c'est ça ? Oui, leur point de départ est assez frappant. Si on regarde au niveau macroéconomique, la croissance dans les pays développés, elle semble relativement stable sur le long terme. Bon an, mal an. Mais si on zoome, au niveau des entreprises, des secteurs, là c'est une véritable effervescence. Ah oui, Des entreprises naissent, d'autres meurent, des emplois sont créés ici, détruits là. C'est cette turbulence microéconomique qu'ils cherchent à expliquer et surtout à lier à la croissance globale. et leur concept clé pour ça, c'est la destruction créative. C'est un terme qu'on connaît, popularisé par Schumpeter, Oui, mais eux, ils ont réussi à le formaliser, c'est ça l'apport. c'est exactement ça. L'idée intuitive de Schumpeter, c'est que le capitalisme avance par vagues d'innovation qui rendent les anciennes technologies, les anciens produits, obsolètes. D'où le créatrice et destructrice. Voilà, c'est créateur parce que ça apporte du neuf, de la valeur, mais c'est aussi destructeur parce que ça élimine l'ancien, ça dévalorise des actifs, ça fait disparaître des entreprises, des emplois. C'est un processus qui est intrinsèquement ambivalent. Oui, on le sent bien. Et l'apport vraiment fondamental d'Aghion et Howitt, ça a été de construire un modèle mathématique rigoureux de ce processus. Il montre comment cette destruction créatrice au niveau micro peut engendrer une croissance stable et endogène. Endogène. C'est-à-dire, auto-entretenue par le mécanisme même de l'innovation. La croissance n'est pas due à un facteur externe, elle naît du processus lui-même. Pour quelqu'un qui découvre la modélisation économique, c'est un exemple très puissant de comment on peut traduire une idée littéraire forte, comme celle de Schumpeter, en un cadre analytique précis qui génère des prédictions. et comment il fonctionne ce modèle dans les grandes lignes ? Qu'est-ce qui pousse les entreprises à innover sans cesse ? Au cœur du modèle, il y a l'idée que les innovations améliorent la qualité des biens ou des services. On peut imaginer une sorte d'échelle de qualité. D'accord. Chaque innovation permet de monter d'un cran. L'entreprise qui réussit cette innovation, elle obtient un avantage.
souvent un monopole temporaire sur cette nouvelle qualité. Et ça lui rapporte des profits. C'est cet appât du gain qui motive l'investissement en recherche et développement, la R&D. D'accord, ça c'est le côté créateur. Mais où est la destruction là-dedans? Ah, elle est partout. La valeur de l'innovation d'aujourd'hui, elle dépend de manière cruciale de la probabilité qu'une autre entreprise réussisse demain une innovation encore meilleure. Qui va rendre la première obsolète. Exactement. Cette menace constante de se faire détruire par un concurrent plus innovant est paradoxalement le principal moteur qui pousse tout le monde à continuer d'innover. Soit pour rester dans la course, soit pour prendre de l'avance. C'est une espèce de course sans fin en fait. C'est une vision un peu darwinienne de l'économie, non? Oui, on peut dire ça. Et ça a des conséquences importantes. Par exemple, ça éclaire pourquoi les nouveaux entrants, les outsiders, sont parfois plus enclins à faire des innovations radicales que les entreprises déjà établies, les incumbents. Pourquoi donc? Une entreprise en place qui fait déjà des profits avec la technologie actuelle, elle peut hésiter à lancer une innovation trop disruptive qui risquerait de cannibaliser ses propres revenus. C'est ce qu'on appelle l'effet de remplacement, qui avait été souligné par Kenneth Arrow. Ah oui. Le nouvel entrant, lui, il n'a rien à perdre et tout à gagner, à tout bousculer. Ce lien entre les décisions micro des entreprises et la croissance macro de l'économie est donc vraiment central chez eux. Mais est-ce que cette croissance qui émerge de la compétition, est-ce qu'elle est forcément la bonne croissance pour la société dans son ensemble? C'est une question absolument cruciale que leur modèle permet d'aborder. Et la réponse, c'est pas nécessairement. La croissance décentralisée, celle qui vient du marché, elle peut être soit trop faible, soit parfois trop forte par rapport à un idéal social. Trop faible? Comment ça? Pourquoi elle serait trop faible? Principalement à cause de ce qu'on appelle les externalités de connaissances, les knowledge spillovers. Quand une entreprise innove, elle crée du savoir. Et ce savoir, tôt ou tard, il finit par profiter à d'autres entreprises. Qui vont s'en inspirer. Voilà, pour leur propre innovation future. Mais l'entreprise initiale, elle n'est généralement pas payée pour ses bénéfices indirects qu'elle apporte aux autres et à la société. Donc, de son point de vue, l'incitation à investir en R&D est potentiellement plus faible que ce qui serait souhaitable pour maximiser le progrès collectif sur le long terme. D'accord, ça je vois. Mais comment la croissance pourrait-elle être trop forte? Ça me semble contre-intuitif. Ça vient de l'effet de vol d'affaires, business stealing en anglais. Quand une entreprise innove et prend des parts de marché à ses concurrents. Une partie de son gain privé correspond simplement à une perte pour les autres. Du point de vue de la société dans son ensemble, ce n'est qu'un transfert, ce n'est pas une création nette de richesse. Si cet effet est très fort, il peut y avoir une incitation excessive à investir dans des innovations qui visent surtout à piquer la place du rival, plutôt que dans celles qui augmentent vraiment la taille du gâteau pour tout le monde. D'accord. Ce qui ouvre évidemment tout un champ pour les politiques publiques, j'imagine, pour essayer de corriger ça. Absolument. Le cadre d'Aghion et Howitt est très riche pour penser l'action publique. Prenez la politique de la concurrence, par exemple. Oui. Le modèle suggère que la relation entre concurrence et innovation n'est pas linéaire, pas simple. Un peu de concurrence, ça stimule l'innovation. Il faut innover pour échapper aux rivaux. Mais trop de concurrence, ça peut la freiner. Oui. Pourquoi? Si la concurrence est tellement féroce que les profits espérés deviennent trop faibles, ça ne vaut plus le coup d'investir des sommes folles en R&D. Donc ça plaide pour une politique de concurrence assez nuancée, qui vise une sorte de sweet spot, un point idéal. Une sorte de U inversé. Potentiellement, oui. Une relation en U inversé, que d'ailleurs des travaux empiriques, menés notamment par Aghion lui-même, semblent confirmer. Intéressant. Et au-delà de la politique de la concurrence? Il y a la justification des subventions à la R&D, justement pour compenser ces externalités de connaissances positives dont on parlait. D'accord. Tout en étant vigilant à ne pas trop encourager l'effet business stealing. Et puis il y a toute la dimension sociale, on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire? Puisque la destruction créatrice, par nature, elle génère de l'insécurité pour les travailleurs dont les emplois ou les compétences sont menacés. Eh bien, il faut des politiques d'accompagnement. Comme l'assurance chômage, la formation professionnelle, ce genre de choses. Oui, c'est ce qu'on regroupe parfois sous le terme de flexicurité. Flexicurité. Oui. Oui, combiner une certaine flexibilité du marché du travail, elle est nécessaire pour réallouer les ressources vers les nouvelles activités avec une sécurité pour les individus, via des filets sociaux, des aides à la reconversion, c'est crucial. Et pas seulement pour des raisons d'équité, j'imagine. Non, aussi pour maintenir l'acceptation sociale du progrès technologique et de ses perturbations. Si les gens ont trop peur de perdre leur emploi sans filet, la résistance au changement risque de devenir très forte et de bloquer le moteur de la croissance lui-même.
D'accord. Est-ce que ce modèle de destruction créatrice, il colle bien avec ce qu'on observe dans les données réelles sur les entreprises, l'emploi? Oui, il est remarquablement cohérent avec beaucoup de faits stylisés, comme on dit en économie. Par exemple? Les taux élevés d'entrée et de sortie d'entreprise, même dans des secteurs qu'on pourrait croire matures, l'ampleur de la création et de la destruction d'emplois qui se produisent en même temps au sein des mêmes industries, ou encore le fait que les entreprises qui survivent ont tendance à croître et être plus productives. Le modèle offre une grille de lecture pour comprendre toute cette énorme dynamique sous-jacente. Et il peut même nous aider à réfléchir aux défis d'aujourd'hui. Je pense au ralentissement de la productivité qu'on observe dans beaucoup de pays riches depuis quelques années. C'est une piste qui est explorée, oui. Ce ralentissement et aussi la baisse qu'on observe du dynamisme des entreprises, moins de création, moins de destruction aussi. Est-ce que ça pourrait être lié, par exemple, à une diminution de l'intensité de la concurrence dans certains secteurs ou à l'émergence de nouvelles barrières à l'entrée qui freinent le processus de destruction créatrice? Le modèle fournit des outils pour analyser ces questions qui sont très complexes, évidemment. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on a vraiment deux éclairages qui se complètent admirablement bien. D'un côté, Mokyr nous raconte la genèse, les conditions historiques un peu uniques qui ont permis à ce moteur de l'innovation auto-entretenue de démarrer durablement. C'est ça, en insistant sur le mariage de la science et de la technique, l'importance des compétences et le rôle des institutions. Et de l'autre côté, Aghion et Howitt nous décrivent le fonctionnement continu de ce moteur dans nos économies d'aujourd'hui. Oui, avec cette dialectique incessante de création et de destruction qui est mue par la concurrence, par l'incitation à innover, et donc il faut bien comprendre les rouages pour essayer de l'orienter au mieux. Et comprendre ces mécanismes, ça semble plus pertinent que jamais aujourd'hui, non? Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple, qui est potentiellement très disruptive. Oui. Mais aussi aux défis climatiques, qui demandent des innovations massives. Et puis il y a les inquiétudes sur les inégalités, sur la stagnation peut-être. Effectivement. Le message sous-jacent des travaux de ces trois lauréats, c'est que la croissance économique basée sur l'innovation technologique, elle n'est ni automatique, ni forcément harmonieuse. Elle résulte d'un équilibre qui est complexe. Un équilibre entre les incitations, les institutions, les compétences et aussi l'acceptation sociale. C'est un acquis qui est précieux mais qui est aussi fragile. Il faut constamment le cultiver, l'adapter. C'est une excellente raison pour aller plus loin que notre discussion d'aujourd'hui, qui est forcément un survol. On encourage vraiment toutes celles et ceux qui nous écoutent, abonnés ou non d'ailleurs, oui, absolument, à prendre le temps de découvrir les travaux originaux de Mokyr Philippe Aghion et Peter Howitt. Ils sont souvent écrits de manière très claire, très stimulante, même pour quelqu'un qui n'est pas un économiste chevronné au départ. Tout à fait. Les idées sont vraiment puissantes et les implications sont vastes. Vous trouverez d'ailleurs des liens vers certaines de leurs publications clés dans les notes qui accompagnent cette émission. C'est une lecture qui vaut vraiment l'investissement en temps, surtout si on s'intéresse aux sources de notre prospérité et aux défis de son avenir. Et pour terminer notre échange, peut-être une dernière pensée, une question un peu ouverte pour prolonger la réflexion. Quelque chose qui s'inspire de leurs travaux et du monde actuel. Oui, on pourrait se poser cette question par exemple. Alors que les nouvelles technologies comme l'IA dont on parlait semblent pouvoir accélérer formidablement le cycle de production et de diffusion des connaissances, on observe en même temps une tendance à la concentration du pouvoir économique dans certains secteurs et peut-être de nouvelles formes de résistance au changement. C'est vrai. Alors, dans ce contexte, comment nos sociétés peuvent-elles réussir à la fois à encourager l'innovation la plus radicale, celle qui transforme vraiment nos vies, tout en maîtrisant, en gérant les aspects les plus déstabilisants de la destruction créatrice? La question de l'équilibre, encore. Oui, comment s'assurer que les bénéfices immenses du progrès technique soient plus largement partagés pour que la croissance reste non seulement soutenue, mais aussi socialement désirable, tout simplement? Une question essentielle. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur ces travaux. Merci à vous.